Good evening, everyone. Very good evening, sir. Good evening, sir. We'll start in 1 minute. Okay, so last class we were doing monsoon. आमे monsoon पूरा कर नथले बाकी थिला किछि. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Okay. So monsoon आमे दीटा theory पढ़थिले बाकी पढ़ी नथिले and obviously मोर बहुत अधिक cough होतला. I was down with dengue. तो से दिन भी टे कास अधिक होतला मे भी टे डिस्टरबेंस हेइथिला क्लास रे. ओके, सो मु कोन करबी monsoon आउ थरे जेति की पढ़ी छे सेटा को मु टे फास्ट रिवाइज करे देबी तापरे विल कंटिन्यू विथ monsoon. ठीक अछि. So last class we discussed what is monsoon, right? So please tell me anyone what is monsoon. के कहि परिए monsoon डेफिनेशन लास्ट क्लास हम डिस्कस करथिले. Sir, a seasonal reversal of wind. Seasonal reversal of wind. Okay, fine. So as we discussed last class, what is monsoon? Monsoon is nothing but the seasonal reversal of wind. Okay, आउ जो monsoon word टा सेटा कोठु आछि? It has come from the word mausim, right? It has come from, just a second. Yes, it has come from the word mausim, right? And I had said that what is monsoon? Monsoon is nothing but seasonal wind. Okay, seasonal wind or seasonal reversal of wind. काहे की seasonal reversal of wind हुए मु लास्ट क्लास डिस्कस करथली. आपण को कहितली कि केमती land from the example of land breeze and sea breeze, and monsoon is nothing but a land breeze and sea breeze in a larger scale. सेटा भी मैं आपण को कहितली, राइट? तो monsoon आमर किछि नै बट a large scale seasonal reversal of wind. अब एटा काहे की रिवर्स टा काहे की वे? Because of change in the heat and the change and due to the pressure differential between the land and the sea, right? So here, as you can see the definition, it is nothing but
seasonal winds that reverses their direction with change in season. Okay, seasonal winds that reverses their direction with change in season. Season change hele kon wind change is kemiti change हुए? It is southwesterly in summers and northwesterly in winters. Southwesterly in summers, for example, just see in this diagram, these are the winds, these are the winds. When this crosses the equator, this becomes southwesterly. एमाने southwesterly direction रे जानते in summers. अब winter रे कौन होगा? सेमाने north easterly direction रो आसीबे. Okay, so that's why we say that this is seasonal reversal of wind, and it is southwesterly in summers and northwesterly in winters, right? एटा आपन क्लियर हे जो एतला हमें मॉनसून थ्योरी टिके देखिबा. एटा म आर्थर पढै भी देथिल, सेत में डिटेल रे कहूनी. थ्योरी जतले देखिया सेतले आपनकर आउरी क्लियर हे जिवो. सो मॉनसून एज आई सेड, आगुरु लोकने जानि परले मॉनसून काहे की होची, रीजन कोन की किछि किछि रीजन रे एमिति किछि वर्षा होची आ किछि सीजन रे वर्षा होची. ओके, ता रीजन के जानि परनथले. हेंस व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय Halley. Okay, the first theory was developed by Halley. और तांको theory के हम कौन को classical model of classical theory of monsoon. Okay, so classical theory of monsoon रे Halley कौन कहले? Halley said that monsoon is nothing but a regional level land and sea breeze. Monsoon ta kono? A regional level land and sea breeze. Okay, as we know in summers, what happens in summers? ये diagram रो देखंदु. Summer रे जल्दी कोनटा हिट हुए? Land जल्दी हिट हुए कि water जल्दी हिट हुए? Land जल्दी हिट हुए. So what will happen in summers? As you can see here, the land is getting heated up. Okay, the land is getting heated up. आउ एठी जो पानी अछि, this region, this is the ocean, right? आउ हम जानि छे कि पानी लेट रे हीट हुए. तो जदी गोटे जागा बेसी हीट होउची, सेठी हाई प्रेशर होबो कि लो प्रेशर होबो? हाई प्रेशर. बेसी गरम हेले लो प्रेशर होबो, हाई प्रेशर नु जे भी कहले. काहे कि हाई प्रेशर होबो ता हम गोटे थोर कहि दोछ आपन को कि जस्ट सी हियर, एठी कोन होबो? लैंड हमरो अधिका हीट हबो. अधिका हीट हेले कोन हबो? एठी जो एयर मॉलिक्यूल्स थिबे से माने कोन हेबे? से माने हीट हेबे. हीट हेले कोन हेबे? हीट हेले कोन हेबे? से माने एक्सपैंड करिवे, राइट? जो जिंस को तमे हीट करिवो सेटा कोन हबो? एक्सपैंड हबो. एक्सपैंड हेले कोन हबो? सेटा लाइट हे जिवो. जस्ट अ सेकंड, आई विल चेंज द कलर. एक्सपैंड हेले कोन हबो? सेटा लाइट हे जिवो. आ लाइट हेले कोन हबो? सेटा राइज करिवो ऊपर को. ओके, इट विल राइज अप. as it will rise up, एटा को कन्वेक्शन कोन. जेतले ऊपर को जिवो तो कोन हबो? भाबो एठी ए लैंड रे आपनकर अधिका हीट हला आउ एयर मॉलिक्यूल्स राइज कला, ताले कोन हबो? ऊपर को पळेला. ए एरिया रे कोन हला? एरिया रे आपनकर लो प्रेशर हे गला, राइट? सिमिलरली जो एटा बुझा गला लो प्रेशर केमति हला, जी हाई प्रेशर कहउथले. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, तो आउ जोठी रिलेटिवली कम गरम थिबो ताल सेठी कोन हबो? सेठी हाई प्रेशर हबो, राइट? लो प्रेशर होउची जोठी अधिका गरम होउची, जोठी कम गरम होउची कि जोटा कूलर अछि से एरिया रे कोन हबो? हाई प्रेशर हबो. लो प्रेशर बुझी गेले तो ऑटोमेटिक एटा भी आपण जानि परथिबे. तापरे विंड केमते मूव करे? हाई टू लो कि लो टू हाई? हाई टू लो. हाई टू लो. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो हियर as you can see, एटा देखा जाउनी गोटे सेकंड. As you can see, the wind will move from high pressure to low pressure zones. Okay, and this is known as your eta co breeze. जोडू स्टार्ट होची सेई ना रे आसीबो सी ब्रीज. सिमिलरली जेतबेले विंटर हबो, विंटर रे कोन हबो? लैंड जल्दी ठंडा हबो कि ओशन जल्दी ठंडा हबो? लैंड.
लैंड जल्दी ठंडा हो राइट सो लैंड रे कोन हबो हमरो हाई प्रेशर हबो ओशन रे हमरो कोन हबो low pressure. लो प्रेशर हबो सो विंड कोड कुआडे जीवो फ्रॉम द लैंड To टू द water. वाटर ओके और टू द सी जहाँ भी कोन एंड दिस इज नोन एज योर Land bridge. लैंड ब्रिज ओके एटा आपनकर लैंड ब्रिज आई होप एतिकी क्लियर राइट एटा क्लियर समझसंगो Yes, sir. okay so now let's see what Halley said Halley said that आपनकर जो monsoon it is nothing but a land and sea breeze in a regional scale okay what did Halley say it is nothing but regional scale land and sea breeze that reverse with differential heating of land and sea in different season okay ता माने कोन से कहले कि देखंतु regional scale land and sea breeze फर्स्ट सेटा देखि दवा regional scale land and sea breeze फॉर एग्जांपल एठी देखंतु जो फर्स्ट जो पटे समर लिखि छि एठी देखंतु एपटे एठी जो ब्लू रीजन टा देखा होछि सेठू आपण देखछन विंड जो इंडिया मैप भलिया देखा जाउछि इंडिया मैप जहाँ भी आपन को लागू थिबो तो जो इंडिया मैप भलिया देखा होछि सियाडे गोटे ग्रीन कलर एरो देइछि मु दिस एरो ग्रीन कलर एरो ए एरोटा एटा कोन होछि समर रे जाउछि विंटर रे कोन होछि देखंतु इंडिया मैप जो होछि सेठू इट इज मूविंग टुवर्ड्स द रेड जोन ठीक अछि तो एठी आपन को देखा जाउथिबो कि देयर इज अ रिवर्स ऑफ wind reverse केतोळे होची समर रे from the it is moving from the ocean to the land winter रे कोन होची it is moving from the land to the ocean okay so Halley said it is nothing but regional scale land and sea breeze that reverse with differential heating of land and sea सेटा भी देखि दो differential heating in the summer you know what happens मु कहिथिली कि जो एशियन लैंडमास अछि सेठी बहुत अधिका गरम हुए बहुत अधिका हीट हे जिवो तो कोन होबो सेठी लो प्रेशर हे जिवो सेठी लो प्रेशर हे जिवो जेतळे सेठी लो प्रेशर होबो सिमिलरली अधिका गरम होबो लैंड सेठी लो प्रेशर होबो आउ ओशन कोन होबो एठी देखंतु एठी ओशन कोन होबो ओशन आपनकर रिलेटिवली लेस हीट और कूलर थिबो तो सेठी कोन होबो हाई प्रेशर होबो राइट ओशन कोन होबो हाई प्रेशर होबो जेतळे हाई प्रेशर होबो तो wind could move करिया स्टार्ट करिया from the high pressure to the low pressure that means it will move from the ocean to the land okay I think it is understood to everyone similarly winter रे कोन होबो winter रे राइट साइड डायग्राम रे देखंतु winter रे एठी लैंड हमर कोन अछि कूलर अछि राइट ब्लू कलर देइछि एठी मु एटा land is cool so what will happen there will be high pressure over the land ocean रे कोन होबो ocean रे होबो आपनकर low pressure there will be low pressure over the ocean so the wind will move from the land to the sea this is the direction of the wind see this is the direction of the wind it is the direction of the wind okay so the wind is moving from the land to the ocean so Halley said this is nothing but regional scale land and sea breeze eta बुझाला समझसंगो Halley कर theory is it clear Yes. to everyone Yes, sir. okay okay now next let's move to the next theory that is dynamic theory or shifting of ITC by Dr. Sloan okay सेटा आपन नेक्स्ट थ्योरी ए थ्योरीटा काहे की आसिया को पड़ला ए थ्योरी को एथि में आसिया को पड़ला कि जेतो बळे हैली आपन को कहले कि दिस इज नथिंग बट रीजनल स्केल लैंड एंड सी ब्रीज जेतो एटी कहले इट इज नथिंग बट रीजनल स्केल लैंड एंड सी ब्रीज तो किछि क्वेश्चन थिला कि हमरो 30 to 0 degrees okay from 30 degrees to 0 degrees what is the planetary wind that blows in this region 30 to 0 रे को planetary wind blow करे easterlies okay the easterlies blow करे तो क्वेश्चन आसला कि जनरली ए जगह रे easterlies blow करे but you see here
इन द जो समर जो पटे लिखी से ए डायग्राम टा देखंतु एठी this side you see here the wind here which you see is westerlies ए जो wind टा एठी कोन अछि this is nothing but westerlies right west to aschi mane westerly so they said then why this wind is westerly this Hali could not answer this question ठीक अछि Hali एक question answer दे पारलेनी and this was clarified by Dr. Sloan okay Sloan कोन कहले मु लास्ट क्लास प्रेशर बेल्ट शिफ्ट आईटीसीजेड ए विषय रे डिस्कस करथिली समस्त को सेटा क्लियर अछि काहू डाउट अछि सेथिरे because directly I will go to the theory if that is clear to everyone मु लास्ट क्लास पढैथिली शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड आउ प्रेशर बेल्ट शिफ्ट ए सब पढैथिली मु कोरियलिस फोर्स अरे केमती विंड डिफ्लेक्ट होची anyone is having doubt in that ठीक अछि ताले I am directly going to the theory काल जे डाउट अछि पचार दियंतु okay so we'll move to the theory so shifting of ITCZ by Dr. Sloan कोन कहले Dr. Sloan कहले yes the winds which you see here just a second okay so what did Dr. Sloan say he said that yes the wind that flows here are westerlies and he gave the reason for that से कहले कि जेतो बेले समर हमर नॉर्मली कोन हुए हमर आईटीसीजेड टा कोडी थाए नॉर्मली अरे इक्वेटर राइट आईटीसीजेड टा हमर इक्वेटर रे थाए बट हमें जानी छे कि जेतोले सन रो मूवमेंट हुए सन रो जेतोले अपरेंट मूवमेंट हुए ता संगे रे हमर प्रेशर बेल्ट सेटा भी टिके चेंज हुए प्रेशर बेल्ट ता पूरा कांस्टेंट हुए प्रेशर बेल्ट्स आर not constant right pressure belts are not constant pressure belts are not constant pressure belts sun रे apparent movement रे pressure belts भी shift हुए तो सेति भाई कोन हुए कि जेतले प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुए विंड रो डायरेक्शन भी टिके ता संगे रे चेंज हुए और विंड रो जो कन्वर्जेंस ता संगे टिके चेंज हुए तो डॉक्टर सोन कोन कहले कि आमे देखु जे एठी गोटे बहुत बड़ लैंडमास अछि राइट एशिया ऊपर एशिया रे गोटे बहुत बड़ एठी लैंडमास अछि हिमालय अछि टिबेटियन प्लेटू अछि ए सब बहुत बड़ लैंडमास तो व्हाट डॉक्टर फ्लॉन सेड कि एई एरिया रे समर रे कोन होची बहुत अधिका हीट हे जाउची एई एरिया टा बहुत अधिका हीट हे जाउची तो जेतले एरिया टा बहुत अधिका हीट हे जाउची आमे जानि छे कि प्रेशर बेल्ट्स कांस्टेंट नुए प्रेशर बेल्ट्स कोन हुए शिफ्ट हुए तो आ हमरा आईटीसीजेड माने कोन के इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहबनी सेटा ता फुल फॉर्म आईटीसीजेड मानेटा कोन जोटी एयर टा कन्वर्ज हुए दीटा तळ ट्रॉपिक रो ऊपर ट्रॉपिक यस वेरी गुड तो आईटीसीजेड कोन एठी देखंतु एठी जो लिखा है आईटीसीजेड एठी कोन हुए जनरली आपन विंड आपन को सदर्न हेमिस्फीयर आउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आसी के कन्वर्ज हुए फॉर एग्जांपल एठी विंड एमती आसीबो ईस्टर्लीज फ्लो करिवो आउ एठी भी ईस्टर्लीज फ्लो करिवो आउ एठी विंड कन्वर्ज हुए सेति पई ए रीजन को हम कोन को आईटीसीजेड को ओके आउ एठी काई कन्वर्ज हुए कारण एठी सबटु अधिका लो प्रेशर राइट तो डॉक्टर स्लोन कोन कहले ड्यूरिंग मॉनसून ड्यूरिंग द समर्स आपनकर जो प्रेशर बेल्ट्स अछि से प्रेशर बेल्ट्स कोन होची शिफ्ट हे जाउची टू ऑलमोस्ट अराउंड 25 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड टू ऑलमोस्ट अराउंड 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आईटीसीजेड जो शिफ्ट हे जाउची टू ऑलमोस्ट 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओवर एशिया ऊपर हमर जो आईटीसीजेड अछि सेटा कोन होची मूव कर जाउची ऑलमोस्ट
टू 25 डिग्री नॉर्थ कहीं शिफ्ट होची कारण एठी बहुत अधिक गरम होची तो सेति पई एठी कोन होची लो प्रेशर टा फॉर्म होची जेतले एठी लो प्रेशर टा फॉर्म होची ताले कोन हबो एबे जो विंड कन्वर्ज करिवो से विंड टा कोडी कन्वर्ज करिवो एबे जो विंड कन्वर्ज करिवो से विंड टा कोडी कन्वर्ज करिवो सर 30 डिग्री 30 डिग्री पाखरे एठी 0 डिग्री रे कन्वर्ज करिवो बट एठी कोन हबो एठी हमरो 30 डिग्रीज रे कन्वर्ज करिवो विंड आसी कि जनरली केमती कन्वर्ज करिया कथा एमती कन्वर्ज करिया कथा राइट बट आमे कोन देखुचे मॉनसून टाइम रे विंड टा एमती ईस्टर्लीज है कि कन्वर्ज करूनी विंड एमती ईस्टर्लीज है कि कन्वर्ज करूनी रादर व्हाट हैपेंस this wind converge from the south as your westerlies this wind converge as your westerlies why this wind converge as westerlies seta Dr. Flon clear kale why this wind converge as westerlies see I have written here that ITC shift northwards to around 25 degrees north latitude okay and due to this what happens we had discussed about Coriolis force आपणकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे विंड को कुआरे डिफ्लेक्ट करे राइट आउ साउथ रे टू लेफ्ट राइट सो अबिका देखंदु कोन हबो एटा हला हमर 0 डिग्री राइट एटा हमर 0 डिग्री विंड टा हमर साउथ रो आछि ओके विंड टा हमर साउथ रो आछि ओशन एटी कोन अछि बहुत अधिका सॉरी बहुत माने रिलेटिवली अधिका ठंडा अछि इट इज कूलर हियर एंड द लैंड हियर इज hot we have low pressure here we have high pressure here so the wind is moving from this cooler region to the hot region but as you know हमरो एठी कोन मूव करिया कथा ईस्टर्लीज मूव करिया कथा राइट बट एठी हम वेस्टर्लीज काहे की बिकॉज़ जेतबेले एठू सी रु विंड टा ब्लो करूची इक्वेटर जाय सी एज ईस्टर्लीज ही मूव करची से विंड टा एज ईस्टर्लीज ही मूव करूची बट as it crosses the equator एटा हमरो इक्वेटर as it crosses the equator कोन हबो इक्वेटर एठी विंड टा हमरो एठी हमरो विंड टा क्वाडे डिफ्लेक्ट हेजी टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट विंड हमरो लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हेजी बट हमें जानि छे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को गला परे विंड टा कोन हुए डिफ्लेक्ट क्वाडे हुए टुवर्ड्स द राइट सो एज इट क्रॉसेस द इक्वेटर द विंड गेट्स डिफ्लेक्टेड टू इट्स राइट तो विंड टा डिफ्लेक्ट करियो टू इट्स राइट राइट तो जेता राइट को डिफ्लेक्ट कला ए विंड टा एबे आरो डायरेक्शन कोन एबे ए जो विंड टा मु ए जो डायरेक्शन दा आर डायरेक्शन कोन हेबे साउथ वेस्टर्लीज और साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट राइट जनरली आमे तो विंड डायरेक्शन को विंड जोटू बाहर छी से डायरेक्शन दा कहयो तो एटा एठू आसुची तो साउथ वेस्ट कहबा हम सो by this way Dr. Flon explained why these winds are southwesterly the reason is that when this wind crosses the equator it gets deflected by the Coriolis force and it moves to its right hence it becomes southwesterly and it comes and it reaches India as southwesterly winds and not southeasterly winds एटा क्लियर समझते काहू डाउट अछि एठी किछि इज एवरीवन क्लियर Yes, sir. ओके फाइन तो एठी मु सेही जिंसटा एठी लिखि देइछि फॉर यू टू रेफर एज नोट्स कि ड्यू टू दिस the ITCZ shifts northwards to around 25 degree north latitude okay due to this shift the southeast trades cross the equator and gets modified as southwest monsoon
okay, due to Coriolis force. Southeast trade crosses the equator and gets modified as southwest monsoon due to Coriolis force. I hope एतिकी समस्त को clear थिबो. Let's move ahead. So this theory is the theory of Dr. Flon gave insight into why these winds are southwest monsoon, southwest, right? But still there was many confusion regarding monsoon, like एटा केमिति फ्लक्चुएट होउची, आर इंटेंसिटी केमिति होउची. तो सेति पई सबु the meteorological organizations of many countries, what they did a experiment. Okay, they went for experiments and those experiments were known as monsoon expedition. ठीक है, सेटा एते डिटेल आपन दरकार नै. Monsoon expeditions, and through that they came out with certain theories regarding monsoon, and those theories are known as modern theories. Okay, say theories na ame janiche as modern theories. Our modern theory under रे से mainly dita jinsa कहले. The first thing that they said is the important role played by the Tibetan plateau. The important role played by the Tibetan plateau in the monsoon. And the second is, they also said about the two branches of southwest monsoon. Okay, so in the modern theories we will be reading these two theories. Okay, gote hala the important role that is played by the Tibetan plateau, au gote hala the two branches of the southwest monsoon. Okay, so let's first discuss about the role played by the Tibetan plateau. Okay. Just a second. मो काश एबे भी कमिनी, कारण डेंगू रे जल्दी काश कमेनी. So टिकेट से काश हबो, डिस्टर्बेंस हबो. Sorry for that. Okay, so next is role played by the Tibetan plateau. आमे जानचे कि ये जो लैंडमास टा एटा टिबेट गोटे बहुत बड़ लैंडमास. ओके, ह्यूज लैंडमास. आउ हमर जेतले समर रे सन रे अप्रैल मूवमेंट आसी जे हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाखु, राइट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाखु. सो एठी जो बड़ लैंडमास अछि से कोन हुए, बहुत अधिका हीट हे जाए, राइट? जो टिबेटियन प्लेट्यू हमर कोन हुए, बहुत अधिका हीट हे जाए. तो बहुत अधिका हीट हे गेले कोन हो सेतरे आपनकर लो प्रेशर हे जिवो, राइट? बहुत अधिका हीट हेले आपनकर कोन हो, लो प्रेशर हे जिवो. तो से टाइम रे कोन हो, जेतले अधिका लो प्रेशर हेले कोन हो, नेक्स्ट स्टेप कोन हो लो प्रेशर हेले? यस, लो प्रेशर हेले नेक्स्ट कोन होबे? एयर राइज करबो. यस, वेरी गुड. लो प्रेशर हेले एयर आपनकर राइज करिवो. ओके, तो टिबेटियन प्लेट्यू ऊपरे कोन होबो, लो प्रेशर होबो ड्यू एज the air will rise to the upper atmosphere. ठीक अछि. मु गोटे कथा कहिथिली आगुरु कि गोटे जेट स्ट्रीम अछि, हम जेट स्ट्रीम डिटेल रे किछ करिया दरकार नै. सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम गोटे अछि, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जोटा कि ए एरिया रु फ्लो करे, राइट? अपर एटमॉस्फेयर रे ए एरिया रे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम गोटे फ्लो करे. किंतु जेतो बळे हम टिबेटियन प्लेट्यू रे बहुत अधिका लो प्रेशर हुए, आउ एई ऊपरे आपनकर कोन होबो, एई ऊपरे जेतले विंड टा राइज करिवो. ओके, जेतले विंड टा राइज करिवो, it will act as a barrier. It will act as a barrier to the subtropical. It will act as a barrier to the subtropical jet stream that flows through this area. तो ए एरिया रे फ्लो करथला, एबे किंतु कोन हला, एटा गोटे बैरियर भड़िया ठिया हे गला. तो एपटो से विंड पास करि पारिबो नाही.
बुझा हला सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जोटा सेटा जतले हमर मानसून आसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपणकर हिमालयन रीजन रु मूव करिकी हिमालयन सर्दर्न पार्ट रु मूव करिकी हिमालयन रो नॉर्दर्न पार्ट को पळे माने तार एक्चुअली दीटा ब्रांच थाए एक्चुअली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रो से जतले हिमालय पाखु आसे तार एक्चुअली कोन हुए दीटा ब्रांच हे जाय हिमालय रे डिवाइड हेकी गोटे हिमालय रो नॉर्थ रु जाय गोटे हिमालय रे साउथ रु जाय किंतु एज टिबेटियन प्लेटू रे एठी विंडा कन्वेक्शन पाई ये जो सर्दर्न पार्ट टा हमर मानसून बेले ए सर्दर्न पार्ट टा आउ फ्लो करेनी एटा बुझा हला हम कोन कहली एबे क्लियर एवरीवन साउथ ट्रॉपिक सॉरी यस कोंदो सर आउट रिपीट कर दीजिए ओके देखो हमर जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेरिक एयर एटा समस्त जानि थिबे ठीक अछि तो गोटे जेट स्ट्रीम अछि हमर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ओके ए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कोडी फ्लो करे ऑब्वियसली सब ट्रॉपिकल रीजन रे फ्लो करिवो ता नारु जणा पड़छि ठीक अछि तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अछि से कोन करे से पूरा ग्लोब रे मूव करे राइट पूरा ग्लोब रे मूव करे तो सी जस्ट a second just a second तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पूरा ग्लोब रे मूव करे किंतु जेतल से हिमालयन रीजन को आसे हिमालयन माउंटेन्स पई से कोन हुए हिमालयन रीजन रे दीटा पार्ट डिवाइड हो जाए ठीक अछि गोटे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइड ऑफ हिमालय रे जाए आ गोटे सर्दर्न साइड ऑफ हिमालय रे जीवो राइट एटी पूरा हिमालय हिंदुकुश पूरा से जो माउंटेन सिस्टम टा अछि ता पे से डिवाइड हो जाए दी पार्ट ओके जो सर्दर्न सिस्टम टा से कोन हुए से टिबेटियन प्लेटू ऊपर मूव करे राइट सर्दर्न ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टा सर्दर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टा आपनकर टिबेट ऊपर मूव करे किंतु जेतबेले टिबेट हमर बहुत अधिक गरम हे जिवो टिबेट जेतबेले बहुत अधिक गरम हो मु कोन कहली कि एठी हमर कन्वेक्शन हबो राइट एठी हमर कन्वेक्शन हुए आउ ए कन्वेक्शन जो हुए ता पई कोन हबो ए जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टा आसुची ए जो एपटो देखंतो एमती सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टा आसुची राइट किंतु ए जो कन्वेक्शन टा होउची एठी बहुत इंटेंस कन्वेक्शन हुए काहे कि एटा बहुत अधिक हीट हे जाय तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टा आछी सेटा को ए कन्वेक्शन एज ए कन्वेक्शन टा ताकू एज एन बैरियर एक्ट करे सो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टा अछि सेटा कोन हुए जेतबेले हमर मानसून आसे ओके माने मानसून आसियार गोटे इंडिकेशन हला ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अछि से जेट स्ट्रीम टा आपणकर टिबेटियन प्लेटू ऊपर आउ देखा जीवनी ओके काहे कि कारण सेतबेले हमर बहुत अधिक कन्वेक्शन होबा स्टार्ट हो जाय था आ से कन्वेक्शन रो हमर कोन हुए ए जो ट्रॉपिक से कन्वेक्शन रो कोन हुए हमर ए जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अछि सेटा स्टार्ट हो जाय तो सेतल सेही पार्ट एटा स्टार्ट होबो हमर कोन हुए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम टा टिबेट ऊपरू पळाए आउ खाली तारो गोटे पार्ट जोटा कि नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमालय रु मूव करे बुझा हला बे यस सर ओके ओके सो जेमती मु कहली कि एठी कोन हबो आपनकर तळे लो प्रेशर हबो बट आपनकर ऊपर कोन हबो जेतर तळे लो प्रेशर हबो लास्ट क्लास रे मु कहली ऊपर कोन हबो हाई प्रेशर हबो काहे कि ए विंड जाको जोटा कन्वेक्शन होउची करंट ये जाई कि कोन हबो एठी ऊपर एक्युमुलेट हबो राइट ये ऊपर एक्युमुलेट हबो तो एठी हाई प्रेशर हबो सिमिलरली मु कोन कहितली कि ओशन रे जेतोले हमर एठी की आईटीसीजेड पळेला ओशन हमर कोन हबो रिलेटिवली कूल हबो यस और नो ओशन हमर रिलेटिवली कूल हे जिवो जेतोले रिलेटिवली कूल हबो ओशन ऊपर कोन हबो हाई प्रेशर हबो यस और नो रिलेटिवली कूल हेले ओशन ऊपर मींस सरफेस लेवल रे ओशन रे हाई प्रेशर होउची एठी कोन होउची सरफेस लेवल रे
टिबेट प्लेटू रे लो प्रेशर होची किंतु अपर एटमॉस्फेयर रे टिबेट प्लेटू रे कोन हबो हाई प्रेशर हबो आ अपर एटमॉस्फेयर रे हमर ओशन ऊपर कोन हबो लो प्रेशर हबो एटा बुझा होला समस्त को क्लियर ए पार्ट टा तळे जेतले लो प्रेशर हबो ए विंड टा कोन हबो ऊपर को राइज करिवो ऊपर को राइज कले माने करंट टा ऊपर को राइज कले एठी कोन हबो एठी जाय एक्युमुलेट हबो तो एठी जेतले विंड टा अधिका हे जिवो अधिका एक्युमुलेट हबो एठी कोन हबो हाई प्रेशर हबो सिमिलरली जेतले एठी हाई प्रेशर अछि ऊपर कोन हबो लो प्रेशर हबो मोटा लास्ट क्लास भी एटा कहितली एटा बुझाला समस्त को यस सर ओके तो तापर कोन हबो एठी तो हाई प्रेशर होची एठी तो लो प्रेशर होची the wind start करिवो मूव करिया from this high pressure to this low pressure ए जो लो प्रेशर टा एटा एठी जो हाई प्रेशर टा एठी कोड हुए मैस्क्रीन हाई रे ओके मैस्क्रीन हाई तो अपर एटमॉस्फेयर ऑफ टिबेट प्लेट्यू रु अपर एटमॉस्फेयर ऑफ मैस्क्रीन हाई को गोटे विंड फ्लो करिवा स्टार्ट करिवो अपर एटमॉस्फेयर ऑफ टिबेटियन प्लेट्यू रु अपर एटमॉस्फेयर ऑफ मैस्क्रीन हाई को गोटे विंड कोन हबो फ्लो करिवा स्टार्ट करिवो से विंड एठी फ्लो करिवो आउ डिसेंड करिवो हमर मैस्क्रीन हाई रे डिसेंड करिवो हमर मैस्क्रीन हाई रे तो डिसेंड करिवो एठी ऑटोमेटिकली जो हाई प्रेशर अछि एठी आउरी इंटेंस हे जो से हाई प्रेशर ओके आउ एठी जेतले बहुत अधिक इंटेंस हबो एठी हाई प्रेशर अछि टिबेटियन प्लेटू रे लो प्रेशर अछि तापर कोन हबो ए हाई प्रेशर रु टिबेटियन प्लेटू रो लो प्रेशर को ए विंड टा मूव करिया स्टार्ट करिवो तो एटा राइज दिए इट gives rise to the tropical easterly jet stream eta tropical easterly jet stream को rise करूची ओके आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ए पार्ट का समझन क्लियर सर जो मास्करीन हाई से लैंडमास न से कोन से हां मास्करीन मैस्क्रीन हाईटा गोटे आइलैंड मैस्क्रीन टा गोटे आइलैंड बट ए एरिया टा पूरा मैस्क्रीन ताको कुआउची बिकॉज़ सेटा गोटे आइलैंड आउ ए एरिया टा किंतु पूरा ओशन ही ओके एरिया टा पूरा ओशन ही किंतु सेटा मैस्क्रीन ना दिया होची नियर मैस्क्रीन हाई नॉट एग्जैक्टली ऑन द मैस्क्रीन लैंड एग्जैक्टली मैस्क्रीन ऊपर न किंतु मैस्क्रीन पाखरे सेति पई से रीजन टा को मैस्क्रीन हाई कहउछंदी ओके क्लियर ओके ओके सो एटा समझन क्लियर ए जो जेट स्ट्रीम टा केमती माने केमती इंड्यूस हला एटा समझ क्लियर यस और नो यस सर ओके फाइन okay so this heating of Tibetan plateau and the rise of this or the induction of this tropical easterly jet stream give rise to the monsoonal wind or pushes the monsoonal wind towards the Asian landmass or towards India okay eta samajhte be clear right so that is what is written here that role played by the Tibetan plateau the Tibetan plateau has a large landmass so seti pai kon hochi it generates intense low pressure on the ground ठीक अछि ground रे intense low pressure hobo and high pressure aloft mean माने ऊपर displacing the subtropical jet stream मु जोटा कहली subtropical jet stream को displace करिवो with the tropical easterly jet stream ei jet stream ta amar kon hochi monsoonal wind को इंडिया को पुश करिवो ओके ग्रेजुअली monsoonal wind को इंडिया को just a second gradually monsoonal wind को इंडिया को पुश करिवो it generates intense low pressure on the ground and high pressure aloft displacing the subtropical jet stream with the tropical easterly jet stream in the north south alignment हम देखले north south alignment between Mascarene High and the Tibetan Plateau okay तापर कोन होला this facilitates attracting different branch of southeast trade winds as southwest monsoon to the Indian Ocean एति बुझाला समझ को क्लियर यस सर ओके फाइन एठी देखंतु आ गोटे जिंस हमें जानिले कि जो टिबेटियन प्लेटू लो प्रेशर अछि ओके सेटा
लो प्रेशर होची आउ हमर इटी टिबेटियन प्लेटू आउ इटी हमर मैस्क्रीन हाई जो हाई प्रेशर होची तो ता भितर जेट स्ट्रीम टा मूव करची राइट आणि ऊपर जेट स्ट्रीम टा मूव करची एठी ग्रेजुअली सबसाइड करी कि हमर मॉनसूनल विंड इंडिया को पुश करची तो एठी हिमालय रो गोटे बहुत बड़ रोल अच्छी जो हिमालयन माउंटेन्स अच्छी हमर सी कौन करे ये जो मॉनसूनल विंड टा टिबेटियन प्लेटू को जीवा को ट्राई करे ताकू कौन करे हिमालय एज एन बैरियर ताकू कौन करे हिमालयन एज एन बैरियर ताकू अटके दिया ओके एंड दिस हेल्प्स इन thus Himalaya helps in confining the monsoonal winds in India ठीक अछि एठी कोन होची ए जो monsoonal winds टा टिबेटियन प्लेटू को गला बेले हिमालय ताकू कोन करची एठी ब्लॉक करची हेंस हमर कोन होची इंडिया रे हमें monsoonal rain टा हमको मिलिया रे इजी होची नले कोन हेतांदा आउ सेंट्रल एशिया आडू को पळे थांदा राइट एटा बुझा हला समस्त को Yes, sir. okay so now let's move to the next point or the next theory that it is not a theory it is under the modern theories that it was seen that this monsoon okay this was developed this monsoon when it was approaching India it was divided into two branches जो monsoon टा इंडिया को आछिला एटा दीटा ब्रांच रे डिवाइड हो जाता हम एटा डिटेल रे देखिबा आगु एबे खाली एति की जानि थाओ कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस तो गोटे ब्रांच कोन होजी जेतळे सी इंडियन लैंड मास पे पहुंचुची इंडियन लैंड मास को जेतळे रीच करची मॉनसूनल विंड से दीटा ब्रांच को डिवाइड हो जाउची गोटे ब्रांच हला योर अरेबियन सी ब्रांच आ गोटे ब्रांच हला आपनकर बे ऑफ बंगाल ब्रांच ओके तो अरेबियन सी ब्रांच टा आपनकर जाई कि केरला कोस्ट रे हिट करे एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाई कि अराकान हिल्स रे मु देखैबी सेटा को ठीक अछि अराकान हिल्स रे हिट करे आउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जाए फॉर एग्जांपल एठी मु आपनको एबे गोटे मिनिट पे टिके देखै दोची परे हम आउ देखबा ओके एठी देखंतु एटा हला हमर अरेबियन सी ब्रांच तो मॉनसूनल विंड आसी कि कोन वे दी पार्ट डिवाइड हुए गोटे एपटे जाए तो अरेबियन सी ब्रांच टा आसी कि फर्स्ट केरला कोस्ट रे हिट हुए आउ जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच टा आसी कि एठी देखंतु एठी लिखा हैछि आराकान योमा एठी आराकान योमा लिखा हैछि ये आसी कि कोन वे आराकान हिल्स रे हिट हुए तो सेठू कोन हुए से डिफ्लेक्ट हुए इंडिया भीतर ओके एबे खाली एति जानतो एटा हम आगु को डिस्कस करिया ओके एति की समस्या क्लियर हे गला एबे जाय समस्या क्लियर Yes, sir. ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस एबे जहा हमें पढिले ओके जहा एबे पढिले सेटाला थ्योरीज जदी केबे मोस्टली जीएस रे थ्योरीज पचारंदिनी किंतु बुझिया में थ्योरीज इंपोर्टेंट तो ए थ्योरीज को किंतु जीएस रे कोन पचारि परिबे मेकानिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून ओके कोन पचारि परिबे मेकानिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून तो ए थ्योरीज को हमें जदी कंपाइल करबा ए थ्योरीज को हमें कंपाइल कले हमको मेकानिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून मिलिबो कैन एनीवन टेल मी अबाउट द मेकानिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून हमें जहा थ्योरी डिस्कस कले सेही थ्रू ही हमरो मेकानिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून बाहर के आसीबो सो कैन एनीवन give the answer or how to write or how to if I ask you discuss the mechanism of Indian monsoon will you be able to write anyone कि monsoon केमती आरंभ होउची कोन होउची सेटा केही भी मते आंसर के कहि परिबो तारो you have to just compile the theories that we have studied now in short के भी कहि परिबो सर तिबेटियन प्लाटूटा हिट हेले सेठी लो प्रेशर होउची तो से okay पुल करूची विंडटा से मॉइस्चर लेडन विंडटा इंडिया को आसी कि मानसून होउची टिबेटियन प्लेटू रे जो विंड ता सेटा कूल करची ना Sir, सर can I try? yes yes
Yes sir. Sir, Tibetan plateau ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହଉଛି ସେ ଉପରେ ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ କ୍ଲକୱାଇଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ Okay. what is that ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆସୁଛି ସେ କ୍ଲକୱାଇଜ ୱିଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନିନସୁଲା ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ମାସ୍କାରେନ୍ ହାଇ ଯାଇ ଯାଉଛି ତାପରେ ସେଠି Okay. ହାଇ ପ୍ରେସରରେ ସେ ସବସାଇଡ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ସେଟା Okay. ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରୁଛି ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନକୁ ତ Okay. ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୟାପନିଂ ଇନ୍ ସମର ବେସିକଲି ତ Okay. ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନର ଇଣ୍ଡିଆନ ମନସୁନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତ ପୁଣି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆରବିଆନ ସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ Okay. Okay. Fine. ठीक ଅଛି ଏତିକି ବାଟ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଓକେ what you told is completely correct and that is the mechanism of Indian monsoon we will discuss it now okay so ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ସେଇଟାର ହିଁ ଖାଲି compilation ଏଇଟା right so mechanism of Indian monsoon ତ କଣ ହଉଛି କି ଆମେ ଜାଣିଛେ during the summers ଜୁନ ଟାଇମ ରେ କଣ ହବ sun will be over the tropic of cancer right sun ଟା tropic of cancer କୁ ଆସିବ ତାପରେ କଣ ହବ ଆମର tibetan plateau ଟା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଟିବେଟିଆନ ପ୍ଲାଟୁଟା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ କଣ ହବ ଗୋଟେ लो प्रेशर डेवलप हबो लो प्रेशर डेवलप हबो कारण एठी टिबेटियन प्लाटूटा बहुत अधिक हिट हे जाउची सेथि पई कोन हबो आउ सन टा हमरो आसी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर अछि सेथि पई कोन हबो गोटे लो प्रेशर डेवलप होउची आउ शिफ्ट हबो आईटीसीजेड ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर सन आसीला टिबेटियन प्लाटू हिट होउची आईटीसीजेड शिफ्ट होउची ठीक अछि एतिकी होउची एंड this will lead to disappearance of subtropical jet and emergence of tropical easterly jet stream between masculine high and Tibetan plateau तो फर्स्ट हमरो एथिरे प्रोसेस हला कोन हीट हला लो प्रेशर हला तो ता संगे री आपण आईटीसीजेड लिखि देई परिवे लो प्रेशर परे कोन हबो हमरो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली jet stream induce habo okay and this will lead to just a second this will tropical easterly jet stream induce habo and this jet stream will push the wind towards India as monsoon winds okay so here the low pressure develops with the shift of ITC disappearance of subtropical jet and emergence of tropical easterly jet stream between masculine high and Tibetan plateau ठीक अछि hence what will happen the southeast trade winds cross the equator and start blowing in southwest to northeast direction due to Coriolis force ठीक अछि wind आसीला wind let's say this is India this is your equator तो masculine high somewhere 80 कोडी थिबो तो कोन हला ए जो विंड ठीक अछि कोन हबो एठी हमरो ईस्टर्ली हिसाब रे आसीबो जो masculine जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम रे एठी कोन हितबो सबसाइड करिवो आउ हाई प्रेशर रु लो प्रेशर आडू को से मूव करियो ट्राई करिवो एंड एठी हमरो ईस्टर्ली हिसाब रे मूव करियो बट एज इट विल क्रॉस द इक्वेटर इट विल मूव इन westerly direction ठीक अछि एटा साउथ वेस्ट हबो that is what it is written here the southeast trade winds crosses the equator and start blowing in southwest to northeast direction due to the Coriolis force okay these winds will collect moisture and is divided into two branches it will collect moisture and it will move towards India and at the tip of the Indian landmass it will be divided into two branches that is the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch एतिकी समस्त को बुझा गला एथिरे किस डाउट अछि everyone is it clear Yes, sir. okay so now let's move to the next topic that is the onset and spread of the monsoon एतिकी हम एबे जे जहा पढले हम एटा पढले कि monsoon रो origin केमती होछ
ओके मॉनसून ओरिजिन केमती होची आ सेटा मु मेकानिज्म थ्रू रे आपन को कहली एबे जोटा हम पढे जाउचे सेटा हम पढुचे कि मॉनसून रो ऑनसेट माने इंडिया रे केमती पहुंचुची आउ तारो स्प्रेड टा केमती होची ओके तो हम पढिले कि जो मॉनसूनल विंड्स अछि सेटा दीटा ब्रांच रे डिवाइड होची राइट गोटे ब्रांच हला आपनकर अरेबियन सी ब्रांच आ गोटे ब्रांच हला आपनकर एटी बे ऑफ बंगाल ब्रांच राइट ए दीटा ब्रांच रे हमरो मॉनसूनल विंड्स डिवाइड होची फर्दर हमर जो अरेबियन सी ब्रांच अछि जो अरेबियन सी ब्रांच अछि एटा फर्दर तीनटा पार्ट रे डिवाइड होची ओके फर्दर तीनटा पार्ट रे डिवाइड होची गोटे ब्रांच आपनकर आसी कि एठी वेस्टर्न घाट को हिट करिवो गोटे ब्रांच वेस्टर्न घाट को हिट करिवो आउ गोटे ब्रांच आपनकर जस्ट मुंबई जो कोस्ट अछि तार नॉर्थ रे आपनकर कोन करिवो इंडिया मुंबई रे कोस्ट पाखरे it will move into India and further it will move to Narmada and Tapi Valley. Okay, এই जो ब्रांच टा এটা হলা তার সেকেন্ড ব্রাঞ্চ এটা হলা সেকেন্ড ব্রাঞ্চ জাস্ট এটা মুম্বাই উপরে রয়ে গেল জাস্ট ওকে এইটা কোন হলা এটা হলা তার সেকেন্ড ব্রাঞ্চ এটা কোন হবো আপন মুম্বাই কোস্ট পাখরে इंडिया रे एंटर करिवो एंड इट विल फर्दर मूव इनटू नर्मदा एंड तापी वैली ओके नर्मदा और तापी वैली को मूव करिवो एटा आ गुटे थर्ड ब्रांच ता आपनकर जो कच्छ सौराष्ट्र अछि सेठी की जीवो आ सेठू से कोन करिवो इट विल मूव अलोंग अरावलीज एंड इट विल गो टू द पंजाब प्लेन्स एटा हम टिकेबे देखि दबा ओके लेट्स सी द फर्स्ट ब्रांच दिस इज द फर्स्ट ब्रांच दिस इज द सेकेंड ब्रांच एंड दिस इज द थर्ड ब्रांच जो फर्स्ट ब्रांच अछि से कोन करिवो से ब्रांच आसी कि आपन को वेस्टर्न घाट रे हिट करिवो राइट एबे मते गोटे कथा कोंदु जेतले गोटे विंड गोटे माउंटेन को ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली जेतले हिट करिवो कोन होबो तापरे एनीवन सर राइज करिवो एयर टा ओके राइज कले कोन होबो ठंडा है कि वर्षा कर दो यस सो एठी जेतले वेस्टर्न घाट रे हमरो फर्स्ट ब्रांच टा हिट होबो तापर कोन होबो सेटा ओरोग्राफिकली माने आमे जानि ओरोग्राफिक रेंज जानि थिबे तो सेही में माने माउंटेन को ओरिजिन कोंदी सो एठी ओरोग्राफिक रेनफॉल होबो ओरोग्राफिक रेनफॉल केमथि हुए ए जो विंड आसीबो एठी हिट करिवो आउ आगु को जाई परिवोनी एपडु को विंड आउ जाई परिवोनी ड्यू टू माउंटेन राइट तो विंड कोन करिवो विंड ऊपर को उठिया को स्टार्ट करिवो ओके विंड ऊपर को उठिया स्टार्ट करिवो आ जेतले विंड ऊपर को उठिवो मेकानिकली ऊपर को उठिवो राइट ऊपर को उठिले कोन होबो विंड टा ऊपर गले ठंडा हो कंडेंस हे जाय राइट तो कंडेंस हेले ए एरिया रे कोन होबो रेनफॉल आपनकर होबो ए एरिया रे कोन होबो आपनकर रेनफॉल होबो राइट बट से विंडटा तापर कोन होबो एटा कोन हमरो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट से विंडटा तापर हमरो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट को आसीबो एटा हमरो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ए पार्ट हमरो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट से विंडटा तापर एपडु को आसीबो किंतु से विंडटा एपटे वर्षा करायनी के कहि परियो काहे के एपटे वर्षा करायनी मॉइस्चर न थाई लिवर्ड साइड रे वर्षा हुए यस जेतो बेले लिवर्ड साइड को विंड जीवो सेतोले कोन नॉर्मली जोठी भी आपनकर माउंटेन थिबो विंडवर्ड साइड रे कोन होबो विंडटा राइज करे कंडेंस करे वर्षा करे दे वर्षा कला परे कोन होबो से विंड रा मॉइस्चर नथिबो एठु ओशन रो जो मॉइस्चर नै कि आसी थाए सेही मॉइस्चर टा कोन होबे आपनकर विंडवर्ड साइड रे एपट साइड रे सरी जीवो तो जेतो बेले सेपड को जीवो से कोन होबो तापर मॉइस्चर नथाय आउ फर्दर कोन होबो एठु विंड टा कोन होबो डिसेंड करे एठु विंड टा कोन करियो डिसेंड करियो राइट तो फर्दर आउरी गरम हो जाए तो सेथि पई हमर कोन हुए एपटे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट टा हमर एटा गोटे रेन शैडो जोन एटा कोन हमर गोटे रेन शैडो जोन एठी बेसी वर्षा हुएन ओके एटा समसम बुझा हला एति की जा कहिली एबे यस ओके किंतु एठी किछि किछि एरिया अछि फॉर एग्जांपल हमें जानि छे केरला रे गोटे गैप अछि ता ना कोन बहुत फेमस गोटे गैप अछि
पलक्कड़ गैप, पालघाट पलक्कड़ जहाँ भी कहबे। तो ये देखेनी इट इज समवेयर हियर। तो एठी कौन हुए ए गैप रे हमरो जो मॉनसूनल विंड एठी गोटे छोट गैप अछि, ए गैप रे कौन हुए से विंड टा इट एंटर्स इनटू द पेनिनसुला रीजन। ठीक अछि, एठी कोन हबे एपडू एंटर करि जाय से पेनिनसुला रीजन को ए जो पलक्कड़ गैप सेथि पई किछि हल्का रेनफॉल आपनकर तमिलनाडु रीजन रे ए रीजन रे आपन को देखिया को मिल जाय। एपटे सब जगह रे रेन शैडो थिबो, किंतु जोठी पलक्कड़ गैप अछि से एरिया रे विंड टा कोन हुए इट बिकम्स द विंड इजीली enters into the peninsula region and there is light rainfall in this region। ठीक अछि, एटा थिला आपनकर फर्स्ट ब्रांच। Now let's discuss about the second branch। Okay, the second branch। The second branch मु कोन कहली मुंबई कोस्ट ऊपरे हिट करे आउ एठी भी आउ मुंबई पाखरे कोन गैप कोन अछि थालगढ़ बोरगढ़। yes Thalghat and Borghat and through those gap विंड टा कोन हुए एंटर करे टू सेंट्रल इंडिया। ठीक अछि, सेंट्रल इंडिया को एंटर करे आउ नर्मदा तापी वैली आडू मूव करे। ओके, नर्मदा तापी वैली आडू मूव करे आउ ए एरिया रे हल्का रेनफॉल करे। ओके, सेंट्रल इंडिया रे हल्का रेनफॉल करे। द सेकंड ब्रांच ऑफ द अरेबियन द सेकंड सब ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। ओके, देन लेट्स कम टू द थर्ड ब्रांच। जो थर्ड ब्रांच टा एटा हला हमरो अरेबियन सी ब्रांच रो थर्ड ब्रांच। एटा हमरो कच्छ और सौराष्ट्र रीजन रे एंटर करे, बट एज यू नो ए एरिया रे बेसी किछि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, मींस एरिया रे किछि बेसी माउंटेन्स नहीं। सेथि पई कोन हुए ए एरिया रे विंड टा आराम से क्रॉस करि जाय, बेसी रेनफॉल हुए नी एंड देन इट मूव्स इनटू राजस्थान। किंतु मते गोटे कथा को राजस्थान रे तो एठी अरावली अछि, सेठी काहे वर्षा हुए नी, माने सेठी एते ड्राई काहे कि ताले अरावली पैरेलल होके जाउछि। यस, एठी कोन हुए ए विंड टा अरावली को पैरेलल हे कि जाय। दैट्स व्हाई मु कोन कहितली एठी विंड टा कोन ऑलमोस्ट आपन को 90 डिग्रीज रे स्ट्राइक करछि माउंटेन रे। एठी किंतु कोन हुए अरावलीज को एटा पैरेलल जाय, एज इट मूव्स पैरेलल टू द अरावली इट डज नॉट कॉज रेनफॉल। आमे जानि छे कि ए एरिया टा कोन पूरा डेजर्ट, एठी जमा वर्षा हुए नी, राइट। ओके, सो कौन हुए नेक्स्ट इट पैरेलल मूव करे एंड इट मूव्स इनटू द पंजाब प्लेन्स। इट मूव्स इनटू द पंजाब हरियाणा प्लेन्स। से ब्रांच टा पंजाब हरियाणा प्लेन्स जाई की पहुंच जाए। ओके, सो आगु कौन हुए से ब्रांच टा हमें आगु कंटिन्यू करिया, किंतु एति कि आपण बुझी गले हमरो एपटा जो अरेबियन सी ब्रांच समसम बुझा गला एवरीवन। किसी डाउट अछि अरेबियन सी ब्रांच रे? Okay, so now let's move to the Bay of Bengal branch। Okay, Bay of Bengal branch move करिया। Bay of Bengal branch टा देखो डायरेक्ट एक्चुअली आसी कि इंडिया रे स्ट्राइक करूनी, राइट, इंडियन लैंड मास रे स्ट्राइक करनी, बट इट मूव्स टुवर्ड्स म्यांमार। एपटे मूव करछि देखो एरिया रे मूव करछि, इट मूव्स टुवर्ड्स म्यांमार। म्यांमार मूव करछि, एठी कोन होछि अराकान योमा माउंटेन्स अछि। ओके, अराकान योमा माउंटेन्स अछि। तो ये जो अराकान योमा माउंटेन अछि एठी कोन हुए ए विंड टा आसी कि ऑब्स्ट्रक्ट, ए विंड टा आसी कि ऑब्स्ट्रक्ट हुए आउ पार्ट ऑफ दिस विंड, ए जो विंड टा आसी कि मॉनसूनल विंड एठी जो आसी कि ऑब्स्ट्रक्ट होछि, पार्ट ऑफ दिस विंड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। ओके, एठी गोटे छोट पार्ट इंडिया आडू को डिफ्लेक्ट होछि। एटा देखि परथिबे, एटा देखि परथिबे, एटा कोन हुए इंडिया आडू को डिफ्लेक्ट होछि। एटा जदि इंडिया आडू को डिफ्लेक्ट होछि दीटा ब्रांच हुए। ओके, दीटा ब्रांच डिफ्लेक्ट हुए। गोटे ब्रांच आपनकर ब्रह्मपुत्र वैली आडू जाए। ओके, गोटे ब्रांच आपनकर ब्रह्मपुत्र वैली आडू जाए। ओके, गोटे ब्रांच आपन ब्रह्मपुत्र वैली आडू जाए आउ ए जो ब्रांच टा ये जाए कि गारो खासी जयंतिया पाखरे जतरे पहुंचे, ए जो ब्रांच टा एठी बहुत अधिका रेनफॉल करे। गारो खासी जयंतिया रे एठी कोन करे बहुत अधिका रेनफॉल करे। द रीजन इज ए जो विंड एठी ट्रैप हे जाए, ए जो माउंटेन्स ए जो गारो खासी जयंतिया हिल्स अछि एठी विंड टा ट्रैप हे जाए।
आउ सेथि पई आउ मूव करि पारेनी तो सेथि पई कोन हुए एठी बहुत अधिक रेनफॉल हुए आउ किछि विंड मूव करंती टू आसाम रीजन ओके किछि विंड मूव करन टू आसाम रीजन आउ सेठी आसाम वैली रे रेनफॉल करंती ओके जो सेकंड ब्रांच ता थिला से सेकंड ब्रांच ता कोन हुए सेकंड ब्रांच इट मूव्स टुवर्ड्स द गंगा वैली ठीक अछि एटा उत्कल ब्रांच भी कहंती ए जो ब्रांच टा को उत्कल ब्रांच भी कहंती ठीक अछि एटा कोन करे हमरो ओडिसा आउ वेस्ट बंगाल रीजन रे वर्षा कराए ठीक अछि ओडिसा आउ वेस्ट बंगाल रीजन रे वर्षा कराए फर्दर ये कोन हुए गंगा वैली रे मूव करिया स्टार्ट करे फर्दर विंडा भितरु जाए गंगा वैली रे मूव करिया स्टार्ट करे माने गंगा बेसिन जो रीजन रे अछि से रीजन रे मूव करिया स्टार्ट करे आ धीरे धीरे ये जाई कि ये जो गंगा बेसिन अलोंग ये मूव करे एंड it goes and meets the Punjab and Haryana branch ओके जो थर्ड ब्रांच ता थिला जोटा पंजाब हरियाणा प्लेन्स को पळे आस्थिला एटा कोन करे हमर जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच रो उत्कल ब्रांच ता ये धीरे धीरे कोन करे गंगा बेसिन अलोंग मूव करे कि इट गोज एंड मीट्स द पंजाब हरियाणा ब्रांच ठीक अछि तो एठी तो दीटा को ब्रांच मिसी जानती ये टिके कोन हुए रीइंफोर्स हे जाए विंडा एठी कोन हुए देखंतु एठी कोन हुए जे वर्षा होबो धीरे धीरे मॉइस्चर कमिबो बट जेतोल गंगा बेसिन ऊपर जीवो टिके मॉइस्चर धरिबो ओके सिमिलरली ए ब्रांच रे किछि मॉइस्चर थिबो तो जेतोले माने कंबाइन हे जानती माने कोन हुए रीइंफोर्स हे जाए आउ नॉर्थ वेस्टर्न जो वेस्टर्न हिमालय रीजन रे फुटहिल्स रे एठी कोन करंदी माने टिके अधिका रेनफॉल करे जेंदी ओके सो दिस वाज योर स्प्रेड ऑफ द मॉनसून इन इंडिया एटा बुझा हला समस्त को एटा बुझा हला Yes, sir. सर ओडिसा रे कोन अरेबियन सी ब्रांच टा टोटली आसेनी ओडिसा को अरेबियन सी ब्रांच देखंतु ओडिसा को अरेबियन सी ब्रांच आसेनी आ जदी भी भाबंतु आसी गला भाबंतु ओडिसा को आसी भी गला ताले कोन होबो सेटा बहुत ड्राई हे जइथियो राइट से विंड टा कोन हेइथियो ड्राई हे जइथियो तो सेथि पई सेथुरु किछि वर्षा होबनी जनरली आसेनी एई एरिया रे से विंड टा रहि जाय आ किंतु हमर जो उत्कल ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है सेटा ओडिसा आरो आसे ओके क्लियर यस सर okay fine so this is the notes you can refer afterwards onset and spread of monsoon dita branch achi Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch Arabian Sea branch तीनटा पार्ट रे गोटे obstructed by western ghats गोटे north of Mumbai coast आ गोटे Saurashtra peninsula रे आसे okay the first branch which is obstructed by western ghats it leads to heavy rainfall in western ghats out in the eastern sides we have rain shadow zone due to lack of moisture eta mu apan कहली then second branch it strikes north of Mumbai okay north of Mumbai and moves along the Narmada and Tapi river valleys and causes rainfall in the central India ठीक अछि तापरे आपन third branch it strikes the Saurashtra peninsula and passes over western Rajasthan along Araval सेथि पई कोन हुए सेठी बेसी rainfall हुएनी right and it reaches the Punjab plains this is the Bay of Bengal branch kon huए it strikes the coast of Myanmar and gets deflected to India by the Arakan hills it enters West Bengal from east and southeast ha एटा गोटे जिंस मन रखिबे एटा लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आसी थिला लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर कि हमर जो ईस्टर्न साइड रे मॉनसून टा मॉनसून विंड ईस्टर्ली काई राइट एबे आपण माने रीजन जानि पारले काहे कि ईस्टर्ली बुझी पारले वेस्टर्न माने ईस्टर्न साइड रे काहे कि ईस्टर्न विंड ईस्टर्ली काहे कि समझ बुझी पारले देखंतु एठी कोन हमर एटा कोन आराकन योमा राइट आराकन योमा को वेस्टर्न साउथ वेस्ट रु आछि किन जेतल आराकन योमा रे हीट होउची से विंड डायरेक्शन कोन हे जाउची जेतले आराकन योमा रे हीट होउची विंड डायरेक्शन कोन हे जाउची साउथ ईस्ट होनी
ଏଠି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ରୁ ଆସୁନି ୱିଣ୍ଡ ଟା, yes ବୁଝା sir, ଯାଉନି ଏଇଟା ନା ବୁଝାଗଲା? yes sir, ୟେସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ୱିଣ୍ଡ ଟା ଆମର କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ ରେ ମନସୁନାଲ ୱିଣ୍ଡ ଟା ଇଷ୍ଟର୍ଲି ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଥାଏ, ରାଇଟ୍? ସେଥିପାଇଁ okay, so it has also two branches. এটা আমি জানলে east और south east ରୁ ଆସୁଛି, so it has two branches. One moves up to Brahmaputra Valley and it causes widefall rainfall in Garo and Khasi hills. তারপর আরেকটা moves along the Ganga plain, okay, up to Punjab and Haryana. It joins the Arabian Sea branch. These two branches causes rainfall in the western Himalayas, okay. They are reinforced and they causes rainfall in the western Himalayas, not eastern Himalayas. এটা বুঝা গেল ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ओके, आगू बढ़िया। Yes, sir. ओके, सो देखंतु अबिका आमे जानिले कि मेकानिज्म ऑफ मॉनसून कोन, स्प्रेड ऑफ मॉनसून कोन, एटा जानिले, थ्योरीज भी जानिले। अबिका जदि आपनकु के पचारियो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंडियन मॉनसून, मु एटा पढिनी, किंतु आपण ऑलमोस्ट अधा फैक्टर्स, अधा नुहे 80% फैक्टर्स जानि सारि। तो कौन होगा फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडियन मॉनसून ना, क्वेश्चन किछि भी आसी पारे, फैक्टर्स पचार देबे जानि, कौन कहबे? एनीवन? sir, Sir, outer question ଟା କହିଲେ। मु कहली कि जदि क्वेश्चन आसियो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंडियन मॉनसून और फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द इंडियन मॉनसून, तो आपण कौन कहबे? sir, we'll start with ITCZ movement. ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, देखे। ओके, किए कहउचंदी कोन, तो आउथरे तीन जण कहउतले, कोन? ITCZ movement. ओके, तिब्बत प्लेन। तिब्बतन प्लेट्यू रो ठीक से मैंने गरम न ओके, ओके, the heating of the Tibetan plateau, how? sir. Factors affecting Indian monsoon is like Western Ghats arrivals. They also affect the distribution of monsoon and the direction of monsoon, and also Okay. and the temperature difference in the Indian Ocean that also impacts the intensity of Indian monsoon, how strong it would be. Okay, And seasonality, for example, in a summer season, it happens because the Tibetan plateau gets heated in summer only. हाँ सेटा ही है, सेटा टिबेटियन प्लेट्यू रा हिटिंग से सेम पॉइंट सेटा। ओके, Sir, second thing, one more thing is the situation of Himalayas also. It greatly determines the direction the and situation of the location of Himalayas the location of Himalayas, okay, very good. and Aravallis and Western Ghats, all the three different mountain ranges. Okay, fine. sir, subtropical westerly jet stream, Yes, subtropical westerly jet stream and the tropical easterly jet stream. Okay, what else? sir, El Nino, La Nina, Yes, very good. ओके, अबिका आपण जानि पारले कि फैक्टर्स आपण पढी सारलेनी, बस एतिकी कि मु आपण को कहिनी कि दीज आर द फैक्टर्स, बट तो सेईटा डिपेंड करछि आपण केते भलो कि गोटे टॉपिक एनालाइज करछन। मु मे बी फैक्टर्स पचार देबी, सेने एग्जाम रे आउ किछि पचार देबे, मु कहबी आपण को फैक्टर्स कह दे, सेने एग्जाम रे आउ किछि पचार देबे। द थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हे गला, आपण जानि गले कि एई जिंस पाई मॉनसून होउछि, एइथि पाई मॉनसून ओरिजिन होउछि, टिबेटियन प्लेटू हीट होउछि, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एपरेंट मूवमेंट होउछि सन रो, आपण को आईटीसीजेड मूव होउछि, टिबेटियन प्लेटू हीट होउछि, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अछि, सेठी मैस्कुलिन हाई होउछि, जो टेंपरेचर डिफरेंस अछि ता पई होउछि, राइट? तो ए सब फैक्टर आपण ऑलरेडी जानि सारी लेनी, परीक्षा किछि भी पचारि पारे, किंतु आ बाहरु किछि आसीबो, आपन लागियो कि अच्छा एटा तो बाहरु किछि नै, आ भितरु ही आसीबो, बट द थिंग इज दे माइट ट्विक द क्वेश्चन अ बिट
टू कंफ्यूज यू आउ कौन हुए आमे सेठी प्रेशर टाइम रे हमको बुझा जाए बट जदि आम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी जिनस ऑटोमेटिकली आमे करि परिबा ओके सो एक्चुअली बाकी सब फैक्टर तो एथिरे आसी जाइछि द नेक्स्ट फैक्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द एल निनो ओके सो एल निनो ता कोन फर्स्ट हमें गोटे कॉन्सेप्ट जानिया कि हमर पैसिफिक ओशन रे हम स्क्रीन विजिबल अछि समस्त स्क्रीन विजिबल अछि यस सर ओके तो हमर पैसिफिक ओशन रे कोन हुए एटा एटा हमर दिस इज ईस्टर्न पैसिफिक दिस इज वेस्टर्न पैसिफिक एथरे के कंफ्यूज हेबेनी ओके पैसिफिक रो ईस्ट और वेस्ट हमें कथा होचे ओके सो दिस इज योर ईस्टर्न पैसिफिक दिस इज योर वेस्टर्न पैसिफिक एटा समझे क्लियर अबिका ईस्टर्न पैसिफिक रे हमर कोन हुए जनरली देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक भितरे जनरली सेथर गोटे प्रेशर डिफरेंस थाए एग्जैक्ट रीजन नॉट नोन ठीक अछि एग्जैक्ट रीजन एबे जाय जणा नै बट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस टू रीजन तो जति प्रेशर डिफरेंस हैला लेट्स से एठी हमरो हाई प्रेशर अछि एठी हमरो लो प्रेशर अछि तो विंड ता केमते मूव करिवो कोटू कोडे मूव करिवो हाई हाई प्रेशर टू टू लो लो दैट मींस फ्रॉम द ईस्ट पैसिफिक टू द वेस्ट पैसिफिक यस और नो जेतो बळे ईस्ट पैसिफिक रु वेस्ट पैसिफिक हमरो विंड ता जतले मूव करिवो विंड ता जतले ईस्ट पैसिफिक रु वेस्ट पैसिफिक मूव करिवो will not that wind drag the oceanic surface water will it not drag the surface oceanic water along with it जेतल wind ता flow करिवो आमे आपण जदी हमर तो दरकार नै सेटा किंतु आपण प्रिलिम्स पय जेतल पढिथि ओशन करेंट्स the factors that impact the ocean current सेथिरे आपण पढिथिबे कि planetary winds गोटे फैक्टर तारो आउ सेथुरु आपण पढिथिबे कि केमती गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट केमती इंपैक्ट हुए ड्यू टू प्लैनेटरी विंड्स मन पड़छि किछि Yes, sir. हां तो विंड कोन करे जेतबेले जाय से कोन करियो ता संगे वाटर को भी ता संगे ड्रैग करे राइट तो कोन हुए देखंदु एठी मु कोन कहली हमरो ईस्टर्न पैसिफिक रे हाई प्रेशर थाए वेस्टर्न पैसिफिक रे लो प्रेशर थाए तो जेतबेले विंड ता मूव करिवो फ्रॉम ईस्टर्न पैसिफिक दैट इज फ्रॉम द कोस्ट साउथ अमेरिकन कोस्ट टू द ऑस्ट्रेलियन एंड इंडोनेशिया कोस्ट तो कोन हो तो विंड ता मूव करिवो सी ता संगे सरफेस वाटर को भी मूव करिवो ओके सरफेस वाटर को भी मूव करिवो तो एठी जते लो प्रेशर अछि ता माने एठी वाटर ता टिके अधिका हीट थिबो यस और नो ए एरिया रे वाटर रो टेंपरेचर अधिका थिबो यस और नो Yes, sir. आ ए एरिया रे टेंपरेचर कम थिबो एठी टेंपरेचर कम थिबो एठी टेंपरेचर कम थिबो अधिका थिबो राइट हमरो वेस्टर्न पैसिफिक तो जेतो बळे विंड हाई प्रेशर रो लो प्रेशर मूव करछि विंड कम करछि ता संगे सरफेस वाटर को भी मूव करूछि अब हमें जानि जे कि सरफेस वाटर has more temperature than the water underneath it yes or no surface water ता अधिका हीट थिबो काहे कि पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट अधिका होथिबो समझ बुझा होछि सरफेस रे जो पानी ता थिबो तार टेंपरेचर ता अधिका आइथि आ बॉटम वाटर रो टेंपरेचर ता कम थिबो yes or no Yes, sir. यस सर तो जेतो बळे एठी विंड ता ड्रैग करछि सरफेस वाटर को तो एई एरिया रे कोन होछि गरम पानी ता आछी एई एरिया रे गरम पानी ता आछी अलोंग द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया जेतल गरम पानी आछी एठी आउरी कोन होछि ए लो प्रेशर ता आउरी इंटेंसिफाई हेजिवो लो प्रेशर ता इंटेंसिफाई हबो तो लो प्रेशर ता इंटेंसिफाई हेले कोन हबो एठी कन्वेक्शन हबो कन्वेक्शन हेले कोन हबो एठी एयर रे अधिका मॉइस्चर रहिबो यस और नो एठी एयर रे अधिका मॉइस्चर रहिबो यस और नो Yes, sir. आउ कोन हुए हमरो जो पेरू चिली कोस्ट रे जो साउथ अमेरिका रो पेरू चिली कोस्ट रे कोन हुए एठी कोन होची सरफेस पानी ता पळौची एठु सरफेस पानी ता पळौची
तो कौन होची अंडरनीथ जो ठंडा पानीटा अछि कूल वाटर इट राइजेस अप कूल वाटर टा कौन हुए ऊपर को आसे कूल वाटर ऊपर को आसले एरिया रे कौन हुए ठंडा रुहे आ एरिया रे गरम रुहे एटा नॉर्मल कंडीशन रे रुहे एटा समस्त बुझा होची मु कोन कहूची एबे एतिक बुझा गला sir. ओके फाइन सो जेतबेले ए एरिया रे अधिक गरम होची मु कहली एठी कन्वेक्शन हबो तो वेपर रहइबो एयर रे मॉइस्चर रहइबो अधिक एयर रे आमे जानि जे ईस्टर्लीज केमति मूव ईस्ट टू वेस्ट माने एपडू मूव करिवो ईस्टर्लीज ए डायरेक्शन मूव करिवो ईस्टर्लीज यस और नो तो जेतबेले ईस्टर्ल आउ ता संगे रे एठी जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर अछि ता पई ए विंड भी गोटे मूव करछि राइट ता पई ए विंड भी गोटे मूव करछि तो एठी जो ईस्टर्लीज आसुची एठी जो ईस्टर्लीज आसुची ए ईस्टर्लीज ता कोन आउरी बेसी इंटेंसिफाई हे जिवो ए ईस्टर्ली ता कोन हे जो स्ट्रांग हे जिवो आउरी स्ट्रांग हे जिवो ए ईस्टर्ली ता स्ट्रांग हे जिवो आउ ये कोन करिवो एठी जो मॉइस्चर अछि एयर रे मु कहली एठी एयर रे अधिक मॉइस्चर थिबो एई मॉइस्चर को सी कोन करिवो ड्रैग करिवो टुवर्ड्स द इंडियन ओशन ईस्टर्ली स्ट्रांग हे गला सी कोन करिवो एई मॉइस्चर को इंडियन ओशन को ड्रैग करिवो तापर इंडियन ओशन को ड्रैग करिवो मते को नेक्स्ट कोन हबो हमर जो वर्षाटा हबो इंडिया रे सेटा एई कंडीशन रे भलो हबो ना खराब हबो ଭଲ ହବ Kaiki? Because it is dragging this moisture along with it. The easterlies is dragging this moisture along with it. जेतोले moisture को ता संगे drag करिके आनुची जेतोले इंडिया को साउथ वेस्ट winds दिबो तो कोन हबो ता देरे भी अधिका moisture थिबो ता देरे भी अधिका moisture थिबो जेतोले अधिका moisture थिबो से कोन करिवो इंडिया रे भलो रेनफॉल करेबो क्लियर ए पार्ट टा क्लियर समझ को डाउट अछि काहू ए पार्ट रे एनीवन काहू डाउट अछि समस्त क्लियर हला ए पार्ट टा हां तो कहि दियो जदी क्लियर हे गला yes sir ओके देन नेक्स्ट लेट्स कम टू अनदर सिचुएशन ठीक अछि एटा फर्स्ट सिचुएशन थिला जोडा म आपन कहि सेटा नॉर्मल कंडीशन नॉर्मली सेया थाय हम कंडीशन किंतु बेले बेले कोन हुए ई जो कंडीशन टा रिवर्स हे जाय ई जो कंडीशन टा एठी मु कहली कि एठी कोन कहली एठी हाई प्रेशर थाय एठी लो प्रेशर थाय राइट एटा मु कहली किंतु बेले बेले ई कंडीशन टा कोन हुए रिवर्स हे जाय बेले बेले ई कंडीशन टा आपनकर रिवर्स हे जाय जे रिवर्स हबो कोन हबो आपनकर एबे मते कोंतु जदी रिवर्स हे गला कंडीशन टा ताले हाई प्रेशर कोडी हबो लो प्रेशर कोडी हबो sir western pacific रे low हां pressure रे sorry high pressure रे ओके sorry low pressure कोन हला नहीं एठी sir western रे high हे हां जिवो eastern रे ईस्टर्न रे लो प्रेशर हे जिवो राइट वेस्टर्न रे हाई हे जिवो ईस्टर्न रे लो प्रेशर हे जिवो तापर कोन हबो नेक्स्ट सेम जदी आपन कांसेप्ट क्लियर अछि गोटे जगह रे हाई हला गोटे जगह रे लो हला ताले कोन हबो हाई रु लो विंड मूव करिया स्टार्ट करिवो जेतले विंड मूव करिवो अब वर्ल्ड हिस्ट्री सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढिथियो विंड मूव करियो ता संगे से कोन करियो वाटर को ड्रैग करी कि ता संगे नबो जेतले वाटर को ता संगे ड्रैग करी नला को वाटर को नउची सरफेस वाटर को नउची सरफेस वाटर इज hotter than the underneath water ओके तो सरफेस वाटर को ता संगे नउची आउ एठी एक्युमुलेट करूची तो एठी कोन हला हमर लो प्रेशर ता जो थिला सेटा आउरी अधिका इंटेंसिफाई हे जाउची राइट एठी लो प्रेशर बहुत अधिका इंटेंसिफाई हे जाउची आउ एठी कोन होउची हाई प्रेशर हे जाउची राइट आउ विंड ता जो मूव करची सेटा को डायरेक्शन में मूव करची ए डायरेक्शन में मूव करची एबे मते कोहंतु ईस्टर्लीज केमती मूव करे ईस्टर्लीज एमती मूव करे राइट ईस्ट टू वेस्ट अबिका मते कोंतु ए जो ईस्टर्ली टा एटा स्ट्रांग हबो ना वीक हबो ए ईस्टर्ली टा स्ट्रांग हबो कि वीक हबो ठीक हबो सर वीक हे जो राइट वीक हे जो बिकॉज़ गोटे ऑपोजिट साइड रु भी गोटे विंड जाउची सो दिस ईस्टर्ली विल बी वीकेंड
ଯେତେବେଳେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଆମର ଆଗରୁ ଏଠି ଯେତିକି ମଏଶ୍ଚର ରହୁଥିଲା ଗରମ ହବା, ଏଠି ଅଧିକା ଗରମ ଥିଲା, ହିୟର देयर वाज लो प्रेशर, एठी कन्वेक्शन थिला, गरम अधिका थिला, मॉइस्चर अधिका थिला एयर। एबे कोन एठी अधिका मॉइस्चर रहइबो कि एयर रे? ऑस्ट्रेलिया कोस्ट रे मॉइस्चर अधिका रहइबो कि नो एज कंपेयर टू नॉर्मल ईयर? ना, मॉइस्चर कमी जीवो काहे कि बिकॉज़ एठी हाई प्रेशर अछि। हाई प्रेशर अछि तो कोन हो? कन्वेक्शन होबोनी तो कोन हो? वेपोराइजेशन होबोनी, मॉइस्चर रहइबोनी एयर रे। ओके, आई गेस दैट इज क्लियर टू यू। तो जेतले क्लियर न, जेतले सेठी मॉइस्चर न रहइबो आउ ईस्टर्ली वीक हे जिवो, एबे मते कोहंतु एठु मॉइस्चर भलो कि इंडिया आडू को जिवो कि, माने इंडियन ओशन को जिवो कि? एठी जेतले मॉइस्चर नाही तो ये No, कोड sir. मॉइस्चर एठी कि नेकी जिवो, आउ ईस्टर्ली हमर एठी वीक हे जाईछि, तो ईस्टर्ली इज वीकेंड, तो ये भी भलो से ईस्टर्ली विंड एठु आसीबोनी आ मॉइस्चर भी भलो से रहिबोनी। ताहले कोन हबो? हमर जो इंडिया रे मॉनसून टा भलो हबो ना खराब हबो? खराब खराब हो। हो यस, डेफिसिट हे जिवो, मॉनसून रे डेफिसिट हे जिवो। ओके, सो आमे कोन जानले नॉर्मल ईयर रे ई जो कंडीशन टा, इट इज रीइंफोर्सिंग द इंडियन मॉनसून। ओके, बट adequate वर्षा होची इंडिया रे, adequate monsoon रहुची, but in the El Nino year what happens, there is deficit of rainfall because due to lack of moisture in the, or less moisture in the easterly wind that is coming from the Pacific। एटा समझ बुझा हला? Is everyone clear with this? Yes, sir. Okay. Okay, so this is a notes for you to refer। normal condition रे कोन होची? high pressure system over South American coast, ठीक अछि, that is your Eastern Pacific। आउ low pressure system over Australia and Indonesia, that is your Western Pacific। so कोन होची? strong wind blows from, strong wind is blowing from high pressure or Eastern Pacific to the Western Pacific, right? तो तापे कोन होची? these winds carry warm surface water westward and increases the moisture content in the air, reinforcing the southeast trade and subsequently the Indian monsoon। okay, eta normal condition rochi, but El Nino year re kon hochi? the normal conditions are reversed। normal conditions are reversed। normal condition reverse hele kon hala? the low pressure over the coast of South America, okay, there is low pressure over the South America, that is Eastern Pacific, and high pressure over Australia and Indonesia coast, that is your Western Pacific। तो wind quad move करियो from Western Pacific to Eastern Pacific, from the Australian region to the South American region or the Peru region। okay, and this makes the trade winds weaker। एटा कोन होबो? trade winds को weaker कर दबो and negatively impact the Indian monsoon। it reduces the rainfall as easterlies carry less moisture। एटा समझ से clear? okay, Yes, so sir. next आमे गोटे डिस्कस करिया सिमिलर कांसेप्ट, मु खाली हल्का की कहि की आगु को बढ़ी जिबे। देयर इज नथिंग मच इन दिस, दैट इज योर इंडियन ओशन डाइपोल। तो आमे एल निनो रे कोन जानले कि देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड द ईस्टर्न पैसिफिक, राइट? किंतु इंडियन ओशन डाइपोल रे कोन हुए? similarly what a pressure difference has between the western Indian Ocean and the eastern Indian Ocean। ठीक अछि, western Indian Ocean and the eastern Indian Ocean। तो एटा similarly जेमति नॉर्मल ईयर आपण देखिथिले सेमति एठी गोटे फेज देखा जिवो। नॉर्मल ईयर मींस द पॉजिटिव फेज, आउ गोटे एल निनो ईयर, दैट इज द जेमति एल निनो देखले एठी सेमति गोटे नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल देखिबे। ठीक अछि, तो कांसेप्ट सेम। कांसेप्ट कोन होबो? मते न देखि कि कोहंतु, मते न देखि कि कोहंतु कि जदी भाबंतु मु कहूची नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ओके, तो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल रे कोन लागुची? इंडिया रे अधिक वर्षा होतो भी कम वर्षा होतो ना कोन लागुची? कम वर्षा होतो।
इंडिया रे कम वर्षा होथिबो वेरी गुड जदि इंडिया रे कम वर्षा होथिबो ताले मते कहंतु कि आमे जेमति जानले कि एल निनो रे कोन होतला एटी एल निनो रे कोन होतला एठी कम वर्षा वेस्टर्न पटे हाँ एल निनो कम वर्षा होतला एल निनो रे कोन होतला वेस्टर्न पटे हमरो एठी लो प्रेशर होतला आउ ईस्टर्न पटे हमरो हाई प्रेशर होतला राइट तो सिमिलरली मते कहंतु जदि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हला जोटा आपण कहले कि नेगेटिव रे नारु जणा पछ कम वर्षा ओके मते कहंतु कि लो प्रेशर टा कोडी होतबो हाई प्रेशर टा कोडी होतबो मु कौन कहली इंडियन ओशन डाइपोल रे इंडियन ओशन रे प्रेशर डिफरेंशियल रे बिटवीन द ईस्टर्न इंडियन ओशन एंड द वेस्टर्न इंडियन ओशन ठीक अछि एटा हला आपनकर ईस्टर्न इंडियन ओशन आ एटा हला आपनकर वेस्टर्न इंडियन ओशन राइट तो मते कहंतु कि जदि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हला जोठी कि वर्षा कम होची ताहले एई सेम कांसेप्ट एठी पके मते कहंतु कि कोठी लो प्रेशर होतबो कोठी हाई प्रेशर होतबो सर वेस्ट रे ईस्टर्न हाई रे हाई प्रेशर होतो प्रेशर वेस्ट आपनकर हाई प्रेशर हबो ओके आउ ईस्ट रे आपनकर लो प्रेशर हबो लो प्रेशर यस वेरी गुड जेतोळे लो प्रेशर आपनकर ईस्ट रे होची चलो एबे हमें से डायग्राम को पढेबा मु जानि से डायग्राम ता देखु नथि आपन माने कहि परछन नै जानि ओके सो सेम कांसेप्ट नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल रे कोन हबो देखो ऑस्ट्रेलिया पाखरे एठी कोन होची हमरो ऑस्ट्रेलिया पाखरे एठी हमरो कोन होची लो प्रेशर होची राइट आउ अफ्रीका पाखरे एपड कोन होची हाई प्रेशर हो तो सिमिलर कांसेप्ट कोन हबो एठी की हाई प्रेशर रु लो प्रेशर मूव करिवो विंड तो जले हाई प्रेशर लो प्रेशर सेपुर जो ईस्टर्ली टा आसुथिबो से कोन हबो एठी ए जो ईस्टर्ली टा आसुथिबो से कोन हबो एठी वीकेन ईस्टर्ली टा एपुर जो ईस्टर्ली टा आसी से वीकेन हे जिवो तो वीकेन हे गले जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जोटा इंडिया को जाई थांदा से भी कोन हबो वीक हे जिवो से भी कोन हबो वीक हे जिवो एंड दैट इज नोन एज योर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल सेमती पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कोन हबो ठीक ऑपोजिट हबो ऑपोजिट हमरो अफ्रीका रीजन रे हमरो सॉरी लो प्रेशर हबो एटा अफ्रीका रीजन रे हमरो कोन हबो एठी लो प्रेशर हे गला ऑस्ट्रेलिया रीजन रे हमरो हाई प्रेशर हे गला हाई प्रेशर रु लो प्रेशर विंड आसीला जो ईस्टर्ली विंड आसी ता संगे ये कोन हबो ये ताको आउट के रीइंफोर्स कर दबो आउ इंडिया रे जो रेनफॉल टा हबो सेटा कोन हबो बेटर हबो आई गेस एटा क्लियर बेसी टाइम भी आपको देकी मत लागु कि लागो भी नहीं समझ बुझी होले Yes, sir. सर एटा एलिनो सहित यार किछ लिंक अछि ना ये हां इंडिपेंडेंटली एलिनो दीटा संगे लिंक अछि मु कहूची एलिनो संगे कोन लिंक अछि मते गोटे कथा कहंतु कि जेतो बळे वेस्टर्न इंडियन ओशन ए जो एठी हमें जोटा देखुचे ए पार्ट टा एटा केतो बळे ठंडा हबो जनरली एलिनो कथा मते कहंतु एटा केतो बळे ठंडा हबो एलिनो टाइम रे ठंडा हबो वेस्टर्न पैसिफिक टा ओके एटा हमर वेस्टर्न पैसिफिक राइट एटा हमर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एटा एलिनो टाइम रे टिक अधिका ठंडा रुवे यस और नो एलिनो कांसेप्ट भाबन Yes, sir. एलिनो टाइम रे कोन हुए एठी हमर हाई प्रेशर हे जाय आउ साउथ अमेरिका कोस्ट हमर कोन हुए लो प्रेशर हुए राइट यस और नो Yes, sir. हां तो जेतले एठी हाई प्रेशर होची एठी ठंडा होची राइट एठी ठंडा होची टिके रिलेटिवली तो सेही टाइम जेतले एटा अधिका ठंडा हबो ता माने ए एरिया टा भी ठंडा होची ए एरिया टा भी ठंडा होची और सेही टाइम रे एठी कोन हबो रिलेटिवली टिके गरम रहइबो तो सेही टाइम रे कोन हबो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हबो सेति पई गोटे सेकंड पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हबो सेति पई कोन हुए जनरली कोन हुए एल निनो इयर्स रे हमको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल देखिया को मिले एल निनो इयर्स रे हमको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल देखिया को मिले जदि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल टा बहुत अधिका स्ट्रांग थाए जदि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल टा बहुत अधिका स्ट्रांग थिबो ताले एल निनो रो इंपैक्ट टिके कमी जाय एल निनो रो इंपैक्ट टिके कमी जाय आ इंडिया रे ठीक ठाक रेनफॉल हेई जाय जदि ई डाइपोल टा बहुत अधिका स्ट्रांग थिबो किंतु जनरली एल निनो रो इंपैक्ट बहुत अधिका रुए इंडियन ओशन डाइपोल रो इंपैक्ट
टिके कम रुहे सेथि पई एल निनो रो इंपैक्ट बहुत अधिक रु किंतु बाय चांस भाबंतु कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बहुत स्ट्रांग है गला तो एल निनो रो इंपैक्ट टिके कमी जाए सिमिलरली एटा भी उल्टा हुए एठी भी उल्टा हुए जेतोले नॉर्मल ईयर रे आपन को टिके नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल देखिया को अधिका मिले बट मु जेमति कहली आरो इंपैक्ट बहुत अधिका थाए सेथि पई एटा एस्ते इंपैक्ट करि पारेनी क्लियर बुझा हला यस सर ओके ओके सो से जिनस लिखी इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कौन हम वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन दैट इज योर अफ्रीका सोमालिया कोस्ट एठी and that becomes warmer than the eastern Indian Ocean. It is associated with good rainfall. In India. तापर negative Indian Ocean dipole eastern side of the Indian Ocean becomes warmer. ठीक अछि सेटा इंडोनेशिया पाखा and that than western side जोटा अफ्रीका पाखा and it is associated with deficit rainfall. Okay, एटा क्लियर समझतो ए दुटा कांसेप्ट क्लियर एवरीवन यस सर ओके सो आपनकर गोटे असाइनमेंट अछि दैट इज यू विल सी फ्रॉम एनसीईआरटी जो इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11 इंडियन ज्योग्राफी जो पार्टटा अछि सेथिरे देखिबे कि रिट्रीटिंग मॉनसून देइछि सेटा हला आपनकर असाइनमेंट मु खाली किछि जिंस सेथिरे कहि देबी जेतोले रिट्रीटिंग मॉनसून टाइम रे हमर कोन होबो ऑब्वियसली रिट्रीटिंग मॉनसून टाइम रे ऑब्वियसली हमें कोन जानछे कि हमर जो आईटीसीजेड टा सेटा धीरे धीरे कोन होबो आईटीसीजेड धीरे धीरे साउथ को मूव करिवो राइट धीरे धीरे साउथ को मूव करिवो आउ सेटु कोन होबो हमर जो मॉनसूनल विंड सी भी धीरे धीरे कोन करिवे रिट्रीट करिया स्टार्ट करिवे से माने कोन करिवे धीरे धीरे हमर रिट्रीट करिवा स्टार्ट करिवे तो जेतले से रिट्रीट करंदी सेतो बळे हमर से विंड जाको कोन होबो ऑब्वियसली हम जानि छे कि ईस्टर्लीज हे कि रिट्रीट करिवे राइट माने ईस्टर्लीज हे कि रिट्रीट करिवे आ गुटे जिंस जनरली रिट्रीटिंग मॉनसून टा हमर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून संगे ओवरलैप करे रिट्रीटिंग मॉनसून टा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून संगे ओवरलैप करे तो सेतो बळे को भी रीजन रे इंडिया रे काहे लैंड रू जेतो बळे सी को जाउची विंड तो सेतोले कोन हो मॉइस्चर कंटेंट नथिबो राइट तो वर्षा होबनी एटा समसे बुझुछंदी कि एठी कोन होउची सी रु जेतोले साउथ वेस्ट मॉनसून रे कोन होवे साउथ वेस्ट मॉनसून टाइम रे हमर कोन होवे सी रु लैंड को विंड फ्लो करे तो सी रु लैंड को विंड फ्लो करे ए विंड कोन ता संगे मॉइस्चर नै की आसे राइट तो सेथि पई कोन हुए एटा जेतोले लैंड रे पहुंच जाए वर्षा करे किंतु अबिगा जेतोले लैंड रु सी को मूव करूची तो लैंड रु सी को मूव करूची विंड तो विंड रे मॉइस्चर नहीं तो सेटा लैंड ऊपर किछि वर्षा करई पारिबो कि आंसर दिस जेतोले विंड इज मूविंग फ्रॉम द लैंड टू द सी से लैंड ऊपर किछि वर्षा हेई पारिबो कि नो सर हबनी राइट तो हम रिट्रीटिंग मॉनसून आउ मु जेम कहली नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ओवरलैप करे तो सेतो बळे बेसी वर्षा हुएनी किंतु किछि पार्ट of the India get winter monsoon also काहे कि जेतोले ए विंड टा फ्लो करे फॉर एग्जांपल हमें जानछे लेट्स से दिस इज द पेनिनसुला रीजन तो एठी कोन होबो जेतोले किछु विंड जेतोबेले लैंड रु फ्लो करूथिबे से माने कोन करिवे एठी बे ऑफ बेंगल उपरु मॉइस्चर नहीं जानती बे ऑफ बेंगल उपरु मॉइस्चर नहीं जानती एंड व्हाट दे डू when they reach the Tamil Nadu region, they cause rainfall here, they cause precipitation here. बुझाला कारण से माने बे ऑफ बेंगल रु किछि मॉइस्चर उठे नियंती hence Tamil Nadu receives rainfall during the southwest monsoon period as well as the northeast monsoon period. Tamil Nadu receives rainfall during the southwest monsoon period as well as northeast. Southwest बेले केमती एठी तो हमरो वेस्टर्न घाट्स अछि
तो साउथ वेस्ट बेले केमती करूची वेस्टर्न घाट तो ब्लॉक करे ना साउथ वेस्ट टाइम रे ताले केमती तमिलनाडु वर्षा पाउची केरला रे जो गैप अछि से यस केरला गैप जो पलक्कड़ गैप रु कोन हुए हमर एठी मॉनसूनल विंड एंटर करे तमिलनाडु रे तो सेथि पे तमिलनाडु रे वर्षा हुए आ नॉर्थ ईस्ट टाइम रे भी तमिलनाडु रे वर्षा हुए ओके so this is a small concept that I wanted to tell you regarding this एटा बुझा हला समस्त को एटा सर आपन ओडिशा रे असाइनमेंट किछ अफेक्ट पड़ेनी हां कोंदो सर ओडिशा रे किछ अफेक्ट पड़ेनी नॉर्थ ईस्ट ना मॉनसून नॉर्थ ईस्ट मॉनसून टाइम रे ओडिसा रे बेसी किछ इफेक्ट पड़ेनी ओके कारण विंड टा मु कोन कहली कि काफी मॉइस्चर नेले ही आसिकी पड़िबो माने जेतो काफी मॉइस्चर नबो तापर लैंड रे एंटर करिवो ताहले ही हमरो विंटर मॉनसून टा मिले किंतु ओडिसा रे कोन हुए सो विंड तारो डायरेक्शन जेतो विंड टा कोन जनरली लैंड रू ही आसु थाए तो सेति पई तारो इंपैक्ट हुए नि बेसी ओके सो Tamil Nadu is the region which receives rainfall. Tamil Nadu is the region which receives rainfall during the northeast monsoons. Okay, तो एटा आपण एनसीईआरटी रे गोटे पेज अछि एटा टिके आपण सेठी आपण असाइनमेंट रहला एटा आपण देखिबे ओके क्लियर बुझा जीवो आ एमते किछ नाही जोटा कि बुझा जीवो नै आपण ठीक अछि अंडरस्टूड Yes, ओके sir. Okay, just a second. Okay, so now let's discuss regarding what are the positive impact of Indian monsoon. हाँ सर Yes, सर गोटे कॉन्सेप्ट अच्छे ब्रेक इन मॉनसून तो सेटा मते बुझा जानी इनसेक्टर जहाँ सर सर टिके एक्सप्लेन कर दो okay, ठीक अछि मु एक्सप्लेन कर देबी सेटा देखो ब्रेक ऑफ मॉनसून कोन हुए just a second जेमती भी हला एटा ही आपन इंडिया मानिया पड़ियो ठीक अछि तो हमर कोन हुए हमें जानि छे कि देयर इज अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स नॉर्थ यस और नो हमर समर रे हमर सन रो अपरेंट मूवमेंट Yes, पे sir. नॉर्थ आडू जेतले सन रो अपरेंट मूवमेंट हुए सेतले कोन हुए हमर जो प्रेशर बेल्ट हमर धीरे धीरे कोन हुए नॉर्थ को शिफ्ट करे यस और नो हमर प्रेशर बेल्ट धीरे धीरे नॉर्थ को शिफ्ट करे जो प्रेशर बेल्ट आपण मॉनसूनल ट्रफ सुनी थिबे मॉनसून द टर्म मॉनसूनल ट्रफ एटा कोन एटा किछि नय मॉनसूनल ट्रफ टा किछि नय ना दिया छै मॉनसूनल ट्रफ बट इट इज दिस प्रेशर बेल्ट which shifts to the north आमे जो आईटीसीजेड कथा कहउथिले से कोन हो धीरे 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 हमर कोन हो नॉर्थ को शिफ्ट करी जाए राइट with the apparent movement of the sun ठीक है से धीरे धीरे नॉर्थ को जस्ट हां से धीरे धीरे नॉर्थ को मूव करी जाए दैट इज योर मॉनसूनल ट्रफ से तो हमर जेतो बळे सी रु ओशन रु जेतोले विंड टा हमर अट्रैक्ट हुए विंड टा अट्रैक्ट हुए सेटा कोठी के अट्रैक्ट हुए सेटा सेठी के अट्रैक्ट हुए जोठी से मॉनसूनल ट्रफ टा थाए राइट जोठी से मॉनसूनल ट्रफ टा थाए कि जोठी से लो प्रेशर टा थाए सेठी के अट्रैक्ट हुए यस और नो एटा समस्त बुझा जाउची जोठी लो प्रेशर टा थिबो सेठी के अट्रैक्ट हबो जोठी आईटीसीजेड टा सेतोले लाय करूथिबो सेही पॉइंट रे Yes, sir. मॉनसूनल विंड अट्रैक्ट करिवो आ मु कोन कहदी ए आईटीसीजेड विथ द मूवमेंट ऑफ सन ये भी मूव होता है तो देखंतु जेतले भाबंतु एबे एठी अछि आईटीसीजेड ए लाइन ए जगह रे अछि तो जो विंड्स गुडा आसीबे कोन होबे ए एरिया रे बे अट्रैक्ट होबे ऑब्वियसली एठी माउंटेन अछि यार जाई परिबेनी किंतु एबे माउंटेन कथा भूली जानतु तो आसी कोन होबो ए एरिया रे अट्रैक्ट होबे राइट किंतु भाबंतु एबे सन पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाकू पळेला आ ए मॉनसूनल ट्रफ एबे एठी के पळेला ठीक अछि एबे विंड जाको कोठी के अट्रैक्ट हेबे एबे ई विंड जाको आसी कि आपनकर एई पाखरे अट्रैक्ट हेबे एई पाखरे अट्रैक्ट हेबे
एई पाखरे अट्रैक्ट हेबे राइट तो जो विंड आगुरु आसिकी एठी अट्रैक्ट होउथिले कि एठी अट्रैक्ट होउथिले से विंड एबे कोन आसिकी ऊपर अट्रैक्ट होउछन्ती राइट तो एई टाइम रे जेतबेले हमरो मॉनसूनल ट्रफ एठी की पळे आसिला तो आगुरु जो एरिया लेट्स से केरला रो एई एरिया रे बहुत अधिका वर्षा होउतला माने स्टार्टिंग रे एई एरिया रे बहुत अधिका वर्षा होउतला ओके अबिका एई एरिया रे आपन गोटे लल देखा जिवो लल मींस अ ब्रेक लल मींस अ ब्रेक इन द मॉनसून एई ब्रेक ता काहे की देखा जाउची बिकॉज़ ए जो मॉनसूनल ट्रफ टा एटा हमरो कांस्टेंट नुहे दिस मॉनसूनल ट्रफ इज नॉट कांस्टेंट it varies or it moves as per the apparent movement of the sun it moves as per the apparent movement of the sun तो सेथि पई कोन हुए जेतबेले ई मॉनसून ट्रफ मूव करे सेतबेले बेले बेले किछि किछि जागा रे आपन कोन होबो कि ब्रेक देखा जिवो और व्हिच इज आल्सो नोन एज ए लल पुनी जेतबेले कोन होबो भाबंतु टॉपिक ऑफ कैंसर पाखरे पूरा जाई की पहुंची गला ओके तापर सन कोन पुनी रिवर्स मूव करिया स्टार्ट करिवो तापरे ई ट्रफ कोन होबो धीरे धीरे तळकु मूव करिवो सेतबेले भी विंड अट्रैक्ट होउथिबो किंतु वंस कोन होबो एटा पूरा इंडियन रीजन छाड़ी दबो ई ट्रफ टा इंडियन रीजन छाड़ी दबो तापरे इंडिया रे हमरो मॉनसूनल विंड एटू अट्रैक्ट होवा बंद हे जिवो तो सेथि पई हमरो कोन हुए बेले बेले ए जो ब्रेक टा आसे एटा काहे के आसे बिकॉज़ ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ दिस मॉनसूनल ट्रफ और व्हिच वी नो एज ITCZ ठीक अछि बुझा गला एटा सर ऊपर जेतेबेले माने जेतेबेले जो नॉर्थ ईस्ट देखि जो आईटी सेट सेट देइछि तो सेठी जेतेबेले सेठी जेतेबेले विंड अट्रैक्ट होछि तो सेतेबेले लॉल केन देखा जिवो केरला रे सेठी भी तो आसी कि से वेस्टर्न घाट रे तो टकराउत बन हां कोन आउथरे टिके कहबे सर अपन जे करे ना आईटी से जेटा जेतेबेले नॉर्थ वर्ड मूव करछि से सेतेबेले हमर सदर्न पेनिनसुला रे टिके ब्रेक देखा जाय तो तो सेतेबेले ब्रेक को पे देखा जाय कारण सेपट तो माने सेमति विंड तो मूवमेंट होउथबो आ केरला रो वेस्टर्न घाट रे मन तो से ये होउथबो तो ओके आपण कहउछन्ती कि जेतबेले हमर आपण कहउछन जदी ट्रफ टा दी एठी की पळे आसला राइट ताहाले यस एठी ए रीजन रे काई ब्रेक देखा जिवो ना ना ए रीजन आप कहले ना माने केरला कि रे ए रीजन काई पुंती ब्रेक ब्रेक देखा जिवो हां हां माने नै नै सेटा मु जेटा कहली सेटा जस्ट एज एन एग्जांपल रे मु सेटा कहि देली ता माने न कि केरला रे ब्रेक देखा जाए जो ब्रेक टा देखा जाए सेटा जो हमर जो मॉनसूनल ब्रेक देखा जाए तारो किछि फिक्स नाही कि ए रीजन रे ब्रेक देखा जाए इट सम टाइम माने एट सम टाइम्स आपन देखा जिवो कि पेनिनसुलर रीजन रे ब्रेक हे जाईची आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली आपनकर केरला वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में एग्जैक्टली कोनी आपन देखा जिवो लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से आपन को देखा जिवो कि ओडिसा रे किछि टाइम पे वर्षा हेलानी ओके एटा काहे के हबो कारण देखो आपनकर जो मॉनसूनल ट्रफ मूव करे तारो मूवमेंट रे तार किछि फिक्स मूवमेंट नै सो ब्रेक रे एग्जैक्टली किछि फिक्स मूवमेंट नै हमरो केतळे केतळे 10 दिन ब्रेक हबो केतळे केतळे 15 दिन ब्रेक हबो बट एटा काहे की हबो लेट्स से एठी की एबे ट्रफ पळेला आउ एमिति नाही कि ए ट्रफ टा एग्जैक्टली एमती ही मूव करथिबो एमती हेई पारे कि लेट्स से एठी हमरो गंगा बेसिन अछि लेट्स से एठी हमरो गंगा बेसिन अछि तो कोन हबो एठी हमरो कोन हबो जो ट्रफ टा एठी एमती आसीला किंतु एठी जो प्रेशर टा थिबो एठी जो प्रेशर थिबो आउ एठी जो प्रेशर थिबो ता भितरे डिफरेंशियल थिबो कि नै ता भितरे डिफरेंट बिकॉज़ दिस इज अ लैंड एरिया एंड दिस इज द वाटर एरिया ओके तो भाबंतु एठी ए प्रेशर बेल्ट आसला ए प्रेशर बेल्ट कोन हबो एठी की शिफ्ट कर जाइथिबो राइट एठी की शिफ्ट करी कि एपडे पळैथिबो तो जेतोले विंड टा अट्रैक्ट हबो तो विंड टा एठी अट्रैक्ट न होई कि एठी अट्रैक्ट हबो सिमिलरली लेट्स से कोन हबो आपनकर एठी एबे ट्रफ टा अछि ठीक अछि एठी एबे ट्रफ टा अछि जेतोले एठी ट्रफ अछि आउ टिके ऊपर को नै जाउछि भाबंतु एठी ट्रफ अछि ओके एबे एठी ट्रफ अछि माने हमरो लो प्रेशर कोन अछि ए जगह रे अछि ए जगह रे लो प्रेशर अछि ठीक अछि रिलेटिवली ऊपर कोन हबो एठी सॉरी ए जेतले मॉनसून समर मॉनसून तळकू एठी की पळे आछे जेतले एठी लो प्रेशर जेतले अछि फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द लैंड एरिया पूरा आउ एठी कोन अछि हमरो वाटर रीजन अछि ठीक अछि रिवर रीजन अछि
तो एठी जेतले लो प्रेशर हबो एठी कोन थिबो रिलेटिवली हाई प्रेशर थिबो राइट एठी रिलेटिवली हाई प्रेशर थिबो तो एठी आपन को वर्षा मिलुथिबो एरिया रे वर्षा मिलुथिबो एरिया रे वर्षा मिलुथिबो एठी एरिया रे वर्षा मिलुथिबो एरिया रे वर्षा मिलु नथिबो सिमिलरली सेटा डिपेंड करे कि हमर प्रेशर बेल्टा केमिति अलाइन ही कि अछि केमिति बनी कि अछि आ सेटा सब बेले कांस्टेंट रुहेनी तो से जो ब्रेक टा आपण जड़े इनसाइटर पढिबे देखिबे कि से ब्रेक रो किछि फिक्स ब्रेक रो जो लाल टा सेटा किछि फिक्स नै माने एमिति थिबो कि 15 डेज आपनकर पेनिनसुला रीजन रे हला तापरे पुणी वर्षा हे जिवो किंतु किछि टाइम रे आपण देखिबे कि 5 डेज ब्रेक अछि पुणी कोन हबो आपनकर 5 डेज परे मानसून पुणी रिटर्न कर जिवो तो सेटा पूरा ए ट्रफ ऊपर डिपेंड करे ओके आ ट्रफ रो पोजिशनिंग ऊपर डिपेंड करे फॉर एग्जांपल मैं आपन आ गुटे एग्जांपल दउजी तो सेथुर आपन जानि परिबे फॉर एग्जांपल आमे जतो बेले कथा होचे कि एइठी कि जेतले हमर गोटे अरेबियन सी ब्रांच होची आ गोटे बे ऑफ बंगाल ब्रांच होची ओके तो सेटा काहे कि होची जेतले एई पाखकू ट्रफटा आसे जेतले एई पाखकू ट्रफटा आसे से ट्रफटा कोन होवे दीटा पार्ट डिवाइड हे जाय एपड गोटे पार्ट डिवाइड हे जाय एपड गोटे पार्ट डिवाइड हे जाय काहे कि कारण एठी जो प्रेशर रहिबो आ लैंड ऊपर जो प्रेशर रहिबो सेटा डिफरेंट रहिबो सेति पई कोन होबो एपड गोटे ट्रफ आ एपड गोटे ट्रफ डिवाइड हे जाय आ सेही हिसाब रे विंड टा अट्रैक्ट हुए सेमिति जेतले लैंड ऊपर को एटा जाउची तो हमर वाटर आ लैंड रो डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब रे से ट्रफ टा कोन हुए डिवाइड हे जिवो आ ता ऊपर हमर रेनफॉल टा डिपेंड करिवो ओके बुझा गला एटा ओके सर ओके सर ओके so tell what are the positive impact of Indian monsoon सर एग्रीकल्चरल सोइंग डिटरमाइन करे ठीक अछि आउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हेल्प करे okay what else Sir, groundwater teachers were okay Sir, it cools down the climate of weather of Indian subcontinent. कौन कहले सुबिलानी Sir, it cools down the temperature of Indian okay subcontinent. ठीक अछि सर आउ पेनिनसुला रिवर्स रो वाटर सोर्स okay okay next बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आ फैसिलिटेट करे okay what else सर लोकल कल्चर okay सेटा को एमती लिखुची कल्चर यूनिटी लिखुची ठीक अछि फॉर एग्जांपल कल्चरल यूनिटी रो गोटे एग्जांपल म दउची कि जेमति कि हमर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स ठीक अछि ऑलमोस्ट इंडिया रे सब जगह रे सेम टाइम रे हुए भावन आपनकर आसाम रे बिहू हुए आउ साउथ रे आंध्रा तेलंगाना से टाइम रे आपण पोंगल देखिया को मिलियो राइट तो ये जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हुए और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल संगे आपण जानछन कि बहुत हमर फोक डांस फोक सॉन्ग से सब भी एसोसिएटेड तो सेही टाइम रे हमर कल्चरल यूनिटी से सेटा इट ब्रिंग्स कल्चरल यूनिटी इन इंडिया ठीक अछि आउ कोन टूरिज्म बढ़ाए ओके टूरिज्म बढ़े गुड व्हाट एल्स ओके ठीक अछि तो एटा को जेतळे भाबतु हमें पॉजिटिव इंपैक्ट भाबुजे मु जेमति आगुरु कहिथिलि कि क्वेश्चन रे हमें जेतळे भाबुजे हमें केमति भाबिया लेट्स से इन दिस क्वेश्चन
ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଠିକ ଅଛି। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट आपण भाबिबे कि ओके रेनफॉल होउची तो क्लाइमेट रे हमरो सेठी कोन क्लाइमेट चेंज होउची जेमति आपण कहले कि इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ठीक अछि कारण समर परे एटा हुए दैट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ओके फाइन दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आउ कोन हबो एटा पॉल्यूशन कम करियो वर्षा हेले पॉल्यूशन कम हबो Yes, sir. Yes, sir. एयर पॉल्यूशन कम हे जो राइट तो Yes, sir. এই দুইটা আমি দেখলে কি ওকে ক্লাইমেটিক জিনিসরে এটা আসছে তারপরে লেটস কম টু ଆପଣ ସେମିତି ପେଷ୍ଟଲ ମେଥଡରେ ହିଁ ଭାବିବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଷ୍ଟଲ ମେଥଡରେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେଟ ହେଇଯିବ। ଲେଟ୍ସ କମ୍ ଟୁ ଇକୋନୋମି एग्रीकल्चर हबो जेतले एग्रीकल्चर अपन लिखिबे ता संग आउ टिके आंसर रो इंटेंसिटी कि आउ टिके अधिक इंपैक्ट बढ़ाइबे अपन कोन लिख परिबे कि 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन agriculture right and contributes to around 20% of the economy yes or no तो agriculture रू आउ कोन हम भाइ परिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आप पर बहुत डिपेंड करियो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इंडिया रो बहुत अधिका थाए तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फॉरेक्स ए सब भी बहुत डिपेंड करियो यस और नो एटा बुझाला ए पार्ट टा Yes, sir. ओके तो एटा आपण अलगा पॉइंट करि परबे एटा को अलगा पॉइंट करि परबे एटा को भी अलगा पॉइंट करि परबे ठीक अछि। नेक्स्ट आप आसंतु देखिया कि जेमती हमर वाटर रिसोर्स रे केमती कोन चेंज हो जेमती आपण कहले कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज तापरे peninsular rivers are dependent on this flow of peninsular rivers how inland navigation को help करियो a major problem to our inland navigation in peninsular region is because of seasonal rivers yes or no तो for example कुर्ग जदि के जाइथिबे अपन देखि सेठी कावेरी रिवर फ्लो करे तो से रीजन रे कावेरी रिवर जो फ्लो करे सेठी ना से माने खाली मानसून टाइम रे जेतला अपन कर दिबे खाली से जो रिवर राफ्टिंग हुए अपन सेठी देखिबे खाली मानसून टाइम रे ही रिवर राफ्टिंग हुए ठीक अछि आउ अलगा सीजन रे रिवर राफ्टिंग सेठी हुएनी द रीजन इज बिकॉज ऑफ द सीजनल रिवर्स अलगा दिन पानी नथिबो सेठी पई इनलैंड नेविगेशन को ये सपोर्ट करिवो आ हम इनलैंड नेविगेशन रे प्रॉब्लम भी है राइट एटा बुझाला समस्त को तो इनलैंड नेविगेशन को तापरे एटा हमें पानी जिंस कवर कले पानी रे आउ गुटे बड़ जिंस आपण माने छाडले पिसिकल्चर तो आपण जले एमती भाबिए कि हां क्लाइमेट रे कोन इंपैक्ट होउची ठीक अछि क्लाइमेट पर वर्षा होची पानी रे कोन इंपैक्ट आसीबो ठीक अछि एटा आपण एठी की नहीं परिबे ठीक अछि पिसिकल्चर एटा पानी रे आसला मो माइंड रे बे आसला पिसिकल्चर हे परिबो ठीक अछि तापरे आउ टिके अलगा पॉइंट्स माने अलगा मिसलेनियस पॉइंट्स आ कोन हे परियो फॉर एग्जांपल टूरिज्म हां सर मॉनसून सेशन भी हे परबो पार्लियामेंट रो मॉनसून सेशन हे परियो मॉनसून सेशन वर्षा संगे रे किछि ता ना मॉनसून सेशन बिकॉज़ से टाइम रे हुए तो तार मॉनसून रो इंपैक्ट ता ऊपर किछि ना ए सब जिंस रो मॉनसून रो इंपैक्ट अछि आ ऊपर मॉनसून रो इंपैक्ट अछि जदि वर्षा न होबो एटा प्रॉब्लम होबो वर्षा न होले एटा प्रॉब्लम होबो वर्षा न होले भी तो मॉनसून सेशन चलीबो ना पार्लियामेंट रे ओके तो टूरिज्म जेमति मु कहली टूरिज्म प्रमोट कर जेमति कुर्ग कथा कहली
कि वर्षा दिने सेठी तम आपण जिबे जदी आपण रिवर राफ्टिंग मिलियो तो लोक आउ सेठी वर्षा दिने से लैंडस्केप इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल से टाइम रे जिबा पे लोक चाहंदी सेठी ओके सो दैट इज वन पॉइंट आउ कोन मिसलिनियस पॉइंट हे परियो बायोडायवर्सिटी okay this can be a point okay so these are some of the points that is the positives of Indian monsoon एटी मु लेखि के रखि छी आपनकर नोट्स पई कि it reduces the temperature agriculture रे help करियो food processing the export forex एटा असला food security this is a very important point एटा गोटे बहुत बड़ important point एटा आपण लिख करियो कि it leads to food security the food processing industry असला agriculture असला सेथरा हमर food security रे help करियो okay hydroelectricity inland water navigation pisciculture biodiversity tourism cultural unity सेठी मु सेटा लिखलिनी cultural unity आउ pollution एटा एटा फर्स्ट स्टार्टिंग आसम स्टार्टिंग रे छाड़ देइथिली सेट में लास्ट रे लिखथिली रिड्यूसेस पोल्यूशन ओके सो एमती आपण आंसर जनरेट करिया को आपण को इजी होबो ओके अंडरस्टूड तापरे नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ मानसून कोन होबो वी नो Indian monsoon we cannot be dependable on the Indian monsoon the vagaries of Indian monsoon the fluctuation way and that leads to failure of agriculture food insecurity drought food the agriculture failure to farmer suicide way right तापर कोन होबो जदी एग्रीकल्चरल फेलियर हला इन्फ्लेशन होबो फिस्कल बर्डन आसीबो गवर्नमेंट ऊपर राइट आउ कोन फ्लड लैंडस्लाइड्स ट्रॉपिकल डिजीजेस आई एम नॉट इट मु बेसी टाइम दोउनी बिकॉज़ ए पॉइंट आपण इजीली जनरेट करि परिबे okay so these are some of the negative impacts of Indian monsoon okay so now let's discuss this question how far do you agree that the behavior of Indian monsoon has been changing due to humanizing landscapes okay so this is your question how far do you agree that the behavior of Indian monsoon has been changing due to humanizing landscapes so क्या आंसर कर परिए एनीवन पॉइंट्स दियंतु मते कोन हबो क्वेश्चन बुझाला समस्त को सर फास्ट हमें इंट्रोड्यूस कर पारे कि माने इंडियन मॉनसून रो सॉरी मॉनसून रो सिग्निफिकेंस कोन अछि ओके इंडिया ओके इंडिया पे वन सेकंड खाली मते गोटे ता आगुरु मते क्वेश्चन टा बुझे दियंतु ओके सो बेसिकली ये क्वेश्चन रे डेटा पार्ट माने बुझु ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप माने जो ह्यूमन सॉरी आमर जो लैंडस्केप रही है नेचुरल लैंडस्केप माने आगुआ थिला तापरे तो आमे जति ह्यूमनाइज करछे एज इन माने ओके बिल्डिंग बनौछे डिफॉरेस्टेशन करछे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करछे तो ओके सेटा हला परे माने सेटार इफेक्ट इंडियन मॉनसून रे केमति रहउछ ये एंथ्रोपोजेनिक यस ठीक अछि राइट हां कोन एबे सर शॉर्ट टर्म रे तो जेमिति कि डिफॉरेस्टेशन एगुडा कहि पारे लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज एगुडा भी कहि ओके फाइन ना गोटे सेकंड किए मते इंट्रोडक्शन कोथले कहबे बेली तन अंशुमन किए कोथले सर मो कहते कि जो हमें इंट्रोड्यूस हिमांशु कर पारे कि हम्म इंडिया माने मॉनसून रे इंडिया ऊपर केते कोन सिग्निफिकेंट रही गोटे जेनेरिक स्टेटमेंट देन ओके जो एबे रिसेंट जहा चेंजेस अछि इंडियन मॉनसून रे तार गोटे ओके जस्ट गोटे ब्रीफली गोटे पारा रे हमें जति मेंशन कर दा कि एराटिक मॉनसून डिले इन यस अराइवल डिलेड हां हां तो से कि एक्सेसिव रेन होची तो ओके सेमति कि छोटे माने गोटे हां बुझली स्टेटमेंट गोटे पारा देन तापरे हमें कौन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स माने कौन कौन अच्छे और सेटा केमते अफेक्ट करछि तो मान जोटा कि सपोर्ट करछि क्वेश्चन स्टेटमेंट को ओके फाइन ठीक अछि
गोटे जिनस आपन स्टार्टिंग में कहले कि आपन कहबे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन मॉनसून ए क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन मॉनसून दरकार नहीं ओके से कहूँ कि हाउ फार डू यू एग्री दैट बिहेवियर ऑफ इंडियन मॉनसून हैज बीन चेंज हमको एटा देखार अछि कि इंडियन मॉनसून रो बिहेवियर केमति चेंज होउछि एठी सिग्निफिकेंस हमरो दरकार नहीं इट्स नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ठीक अछि हमको एटा ही देखार अछि आपन जोटा ता परे जोटा कहले कि इंडियन मॉनसून रो बिहेवियर केमति चेंज होउछि ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप मींस द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन ठीक अछि त जोड़ा आपन कहले पूरा ठीक कहले स्टार्टिंग रे कि हमें इंट्रोडक्शन देखंतु एठी जति किछि माइंड को न आसीबो कोन करिवे इंडियन मॉनसून व्हाट इज मॉनसून कहि कि इंट्रोडक्शन दे दै परिवे ओके जति किछि माइंड को न आसला संग बट जदि आपण माइंड रे किछि अछि रिसेंटली किछि हेछि जोटा कि आपण जानि चंदे त आपण लिखि परिवे किछि कहि परिवे रिसेंटली कोन हेछि मॉनसून रिलेटेड 2023 रे कोन हेछि डिलेड मॉनसून डिले हो जाइछला 2023 रे फर्स्ट हेलानी किंतु अगस्त पाखापाखी टाइम रे भलो वर्षा हला स्टार्टिंग रे वर्षा हेलानी जून जुलाई टाइम रे भलो वर्षा हेलानी जेतर अगस्त पाखापाखी टाइम रे कोन हला वर्षा भलो हला यस और नो ए वर्ष तो जदि सेमती किछि जिंस करंट रे अछि त आपण सेटा लिखि परिवे कि द रिसेंट change in behavior of the monsoon is visible from the 2023 monsoon which was delayed by almost a month or two ठीक अछि सेटा आपनकर इंट्रोडक्शन देई परिवे जोटा करंट रे अछि न होले यदि किछि माइंड को आसुनी जनरली लिखि देबे कि there recently we have witnessed that the Indian monsoon has been fluctuating okay in its arrival as well as in its intensity तो एमती किछि करी कि आपण इंट्रोडक्शन दे दे परिवे या फिर इंडियन मॉनसून तो किछि न होछि इंडियन मॉनसून दे दे ठीक अछि तापरे आपण कोन कर परिवे बॉडी रे आपण देबे कि इंडियन मॉनसून केमती चेंज होछि तो फर्स्ट आपण जो कहले अंशुमन राइट ठीक कहले हिमांशु सॉरी just a second okay so first point कोन होई परिबो हां एठी अपन पॉइंट पुनी मु कहबी केमती जनरेट करियो जदि इंडियन मॉनसून इंपैक्ट होउची जदि इंडियन मॉनसून इंपैक्ट होउची ताहले इंपैक्ट होबार रीजन कोन थिबो इंपैक्ट होबार रीजन कोन थिबो तारो फैक्टर्स यस और नो आमे जानिले कि इंडियन मॉनसून काहे की होउची मु सेतले कहली कोन कि फैक्टर्स ऑफ इंडियन मॉनसून कि इंडियन मॉनसून रो फैक्टर्स कोन आ जदी गोटे जिंस इंपैक्ट होउची ता माने कोनटा इंपैक्ट होउथिबो ऑब्वियसली ता फैक्टर्स इंपैक्ट होउथिबो यस और नो यस सर बुझा होउची मु कोन कहउची कि आपण जदी किछि भी न मने पड़िबो आपनकर कोन मने पड़िबो कि अच्छा इंडियन मॉनसून रो फैक्टर्स कोन थिला ठीक अछि सेइठु आपनकर पॉइंट्स जनरेट हो आउ गोटे पॉइंट कोड जनरेट हो ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स तो सेटा हम देखिया फर्स्ट किछि फैक्टर्स रो किछि देखि दबा जस्ट फैक्टर्स किछि देखि दबा फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट लेट्स से delayed monsoon it is a general point delayed monsoon why due to change in the climate or due to climate change ठीक अछि एटा गोटे पॉइंट एमति मु फर्स्ट लिखिली कैन डिलेड मॉनसून समस्या जानि चंती ए पॉइंट हमसे लिख देबे आ जनरल लिख देबे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज़ वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कंक्लूजन काहे की एग्जैक्टली डिले होउची हां क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट होउची हम जानु छे एग्जैक्टली काहे की डिले होउची सेटा जाना नै हां एलिनो केबे हला कोन हला सेटा अलग कथा कि जनरली क्लाइमेट चेंज पे डिले होउची हम जानले ए वर्ष भी डिले हेची सेकंड पॉइंट हमें जानि छे कि गोटे फैक्टर कोन मॉनसून रो कि हमरो जो ओशन सरफेस एंड दिस इज आवर लैंड सरफेस जो मॉनसून होउची
ओशन टा रिलेटिवली जेतले कूलर रहउची और हाई प्रेशर ओशन रहउची और लैंड रे जेतले लो प्रेशर रहउची हमर कोन होउची विंड टा मूव करची यस और नो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स अबिका ई फैक्टर्स को आपण धरिबे फैक्टर्स को धरिबे काई कि होउची टिबेटन प्लेटू हिट हे गला आपण को ओशन रिलेटिवली हाई प्रेशर ओशन रोज रिलेटिवली कूलर अछि किंतु आमे जानि जे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज देयर हैज बीन राइज इन द सी सरफेस टेंपरेचर यस और नो there has been rise in sea surface temperature yes Yes, sir. so if there is rise in sea surface temperature don't you think that the monsoonal winds will be impacted जदि ए हाई प्रेशर टा कम हे गला जदि ए हाई प्रेशर टा जति के हाई प्रेशर रहउतला आगुरु सेति के रहिलानी काहे कि टेंपरेचर एठी बढ़ी गला हाई प्रेशर काहे कि रहउतला कारण एठी टेंपरेचर हमर कम थिला एटा कूल थिला आउ एठी कोन हला हमर टेंपरेचर बहुत अधिका रहउतला सेति पई हमर मानसून काहे कि विंड रो इंटेंसिटी टा काहा पे डिपेंड करिवो आपन को प्रेशर डिफरेंशियल ऊपर डिपेंड करिवो जेतो बेले हमर सी सरफेस टेंपरेचर प्रेशर बढ़ी जिवो ए जो प्रेशर डिफरेंशियल टा कमी जिवो यस और नो बुझा हला हम कोन कहूची एवरीवन Yes, sir. तो सेकंड पॉइंट कोन हे परिवो कि इंक्रीज इन द सी सरफेस टेंपरेचर दिस reduces the intensity of the monsoonal winds that approaches India हला सेटा गोटे पॉइंट हेला मु एटी शॉर्ट रे लिखछि खाली that approaches India एटा गोटे पॉइंट हेला तापरे आउ कोन फैक्टर्स अछि आउ जहां भी फैक्टर्स अछि आपण डायरेक्टली ताकू आ संगे लिंक करि परिबेनी कि ओके एथि पाई मानसून इंपैक्ट होजी फॉर एग्जांपल मैं कहली जो प्रेशर डिफरेंशियल गोटे कहली ठीक अछि किंतु बाकी पॉइंट्स आपण एग्जैक्टली जनरेट करि परिबेनी फ्रॉम द फैक्टर्स किंतु गोटे आ गोटे फैक्टर अछि जोटा कि आपण भाबी परिबे दैट इज द एल निनो हमर कोन होची ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एबे फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ एल निनो होची frequent occurrence of El Nino. Due to climate change, there has been frequent occurrence of El Nino. तो ता पई कोन होची जतले frequent occurrence होची El Nino रो ता पई obviously Indian monsoon आपनकर impact होची understood this point आउ एबे जाय गोटे हमने एबे जाय को भी जिनसर कंक्लूजन रे पहुंचे जाने कि exactly this is the reason because this is a new field climate change पे जो impact होची सेटा एबे ता ऊपर रिसर्च चाली छी ओके so these are some of the points that you can generate from the factors itself आउ factors रो बेसी पॉइंट आस परियोनी ओके these are few points that you can generate from monsoon आउ गोटे पार्ट हमर थिला ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप तो मते कोहंतु कि ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप रो कोन इंपैक्ट होची एति कि बुझा गला ए तीनटा पॉइंट बुझा गला आपन को फर्स्ट तीनटा पॉइंट सर जो ब्लैक कार्बन डिपोजिशन होची स्नो रे सेति पई किछि चेंज हे परियो कि मानसून में हां अब सेटा हे परियो मु कहूची से पॉइंट को आसीबा फर्स्ट तीनटा पॉइंट संग बुझा गला Yes, sir. ओके अभी मते कोहंतु ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप रे कोन हे परियो देखो ब्लैक कार्बन डिपोजिशन रे इंपैक्ट हबो फॉर एग्जांपल हमर कोन हबो सेटा कोन कोंदी जस्ट अ सेकंड एल्बिडो ओके हमर ब्लैक कार्बन डिपोजिशन रो कोन हबो एल्बिडो कमी गले कोन हबो जो टेंपरेचर हमर अर्थ सरफेस रो बढ़ी जिवो एग्जैक्टली मानसून से थ्रू इंपैक्ट हबो कि नहीं कारण हमर मानसून पे ऊपर हमर कोन दरकार लो प्रेशर दरकार आ तळे हाई प्रेशर दरकार ठीक अछि तो आपण एमिति भाबी परिबे कि जदी ब्लैक कार्बन डिपोजिट बढ़ुची आपण सब जिंस को लिंक करि परिबे ब्लैक कार्बन डिपोजिट बढ़ुची ताले कोन हबो हिमालयन रीजन रे कोन हबो टेंपरेचर बढ़िबो ना कमिबो बढ़िबो तो बढ़िले कोन हबो बहुत अधिका रेनफॉल हो जाई पारे बहुत अधिका लो प्रेशर हो जाई पारे ठीक अछि तो दैट कैन बी अ पॉइंट
ओके ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप रो कोंदु किछि पॉइंट्स माने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी रो केमती मॉनसून इंपैक्ट हबो आउ एबे आपण मन रखंदु आपण जो ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप को जाउछनी मॉनसून रो फैक्टर्स नाही ए क्वेश्चन पे तो एबे आपण कोन भाबिबे रेनफॉल केमती इंपैक्ट हबो हाँ सर डिफोरेस्टेशन वेरी गुड डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन हेले कोन हबो जीएचजी बढ़िबो यस और नो ट्रांसपिरेशन कमिबो तो सेमिति ही हमरो मॉइस्चर एयर रे कोन हबो कमी जिवो तो जीएचजी बढ़िबो ट्रांसपिरेशन कमिबो मॉइस्चर कमिबो बढ़िबो ताले कोन हबो गोटे जिंस देखंदु यदि जीएचजी अधिका अछि ताले आपनको से एरिया रे कोन अछि टेंपरेचर अधिका अछि ओके सी ए क्वेश्चन रो आपण आंसर एमती भाबिकी दबाको पड़ियो जदि आउ आपन जस्टिफाई करियो पड़ियो जदि जीएचजी बढ़छि ताले कोन हबो से एरिया रे टेंपरेचर आपनकर बढ़ी जिवो राइट टेंपरेचर बढ़ी जिवो यदि टेंपरेचर बढ़ी जिवो ताले कोन हबो लेट्स से मॉनसूनल विंड आसुछि आगुरु एटा कोन होतला ऊपर को जाई कंडेंस हेकी वर्षा होतला अबिका जो टेंपरेचर बढ़ी जाई गोटे एरिया रो अबिका सेति की वर्षा हेई पारिबो कि बुझी पारछनी मु कोन कहूची हमर मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड करे कहा ऊपर हमर मॉइस्चर कंटेंट इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ठीक अछि जेतले टेम्परेचर अपन बढ़ुची त एयर कोन हबो अधिका एक्सपेंड करिवो एयर अधिका एक्सपेंड करिवो जेतले एयर अधिका एक्सपेंड करिवो ताले कोन हबो मॉइस्चर कंटेंट ए एयर रे अधिका रही परिवो मॉइस्चर कंटेंट ए एयर रे अधिका रही परिवो एयर एक्सपेंड कला इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ी गला तो मॉइस्चर कंटेंट एठी अधिका रही परिवो जेतले मॉइस्चर कंटेंट अधिका रही परिवो ताले कोन हबो विल इट नॉट रिड्यूस द रेनफॉल बुझा होची मु कोन कहूची विल इट नॉट रिड्यूस द रेनफॉल ए पॉइंट बुझा होला Yes, sir. ओके तो आपण खाली लिखि परिबे डिफॉरेस्टेशन एंड increase in the greenhouse gases and transpiration impacts the rainfall or impacts the monsoonal winds that approaches the land ठीक अछि आउ कोन लिखि परिबे आउ गोटे पॉइंट अछि कि हमर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे आमे जानि छे कि बहुत अधिक इरिगेशन होची यस और नो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे बहुत अधिक इरिगेशन होची ड्यू टू दिस इरिगेशन सेठी लैंडस्केप रो टेम्परेचर कम रहुची ओके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हमर जो इरिगेशन होची पंजाब हरियाणा प्लेन्स रे कोन होची बहुत अधिका इरिगेशन होची तो ता पे कोन होची सेठी लैंडस्केप रो टेम्परेचर कम रहुची दैट मींस इट इज रिमेनिंग कूल ओके तो सेठी पे कोन होची आमे जानि जे हमर मॉनसूनल विंड प्रेशर डिफरेंशियल रू push way India or it gets attracted due to the pressure difference जेतले आपन को लैंडस्केप एठी कूल होउची so do you think the monsoonal winds don't you think that the monsoonal winds will weaken yes or no yes अंशुमन हिमांशु बुझा जाउची Yes, sir. okay so this is the next point that due to over irrigation in the northwestern region the landscape is remaining relatively cooler hence it is weakening the monsoonal winds that is approaching towards it ठीक अछि then what else आपनकर आमे देखुचे अर्बन फ्लड्स बहुत अधिका देखुचे अर्बन फ्लड्स
ओके, दिस इज नॉट द पॉइंट, आई एम गेटिंग टू द पॉइंट नाउ। अर्बन फ्लड जो बहुत अधिक देखुचे तार वन ऑफ द रीजन हला कि पॉल्यूशन बहुत अधिक होचे अर्बन एरिया रे, तो कौन होची द कंडेंसेशन न्यूक्लियई बढ़ी जाउची। कंडेंसेशन न्यूक्लियई जेतले बढ़ी जाउची तो कौन होची आपनकर, we know that if the condensation nuclei will increase, the condensation will also increase, and this can lead to heavy downpour. This can lead to heavy downpour, right? Hence this is also a reason, that is the humanizing landscape through जो reason अछि एटा भी गोटे reason due to which there has been impact in the monsoon that we are witnessing. Okay, आउ कोन पॉइंट हे परिबो? सर जो हाई राइज बिल्डिंग रोचे तो सेटा भी यस, वेरी गुड। सेटा केमती इंपैक्ट करिवो? तो सेटा ऑब्स्ट्रक्ट करिवो माने ता नेचुरल फ्लो ऑफ यस एटमॉस्फेरिक यस, फ्लो will obstruct the natural flow of the wind. ठीक अछि, एटा गोटे भलो पॉइंट। आउ कोन हे परिबो? कंक्रीटाइजेशन एटा केमती करिवो इंपैक्ट? सर हाई टेम्परेचर करे। yes, it will lead to high temperature। तापर कोन हबो? हाई टेम्परेचर हे गेला ऑब्वियसली आपनकर कंडेंसेशन कमी जीवो। आउ गोटे रीजन भी हबो, माने कंक्रीटाइजेशन आउ गोटे पॉइंट करि पाइबे कि अधिका बिल्ट अप एरिया रु कोन हबो हमरो वाटर साइकिल टा इंपैक्ट हबो। बिल्ट अप एरिया रु केमते वाटर साइकिल इंपैक्ट हबो? कंक्रीटाइजेशन और बिल्ट अप एरिया रु कोन हबो हमरो वाटर जो रन ऑफ अछि सेटा अधिका हे जीवो, राइट? जो रन ऑफ अछि सेटा अधिका हे जीवो। आगुरु कोन होतिला गछ थिला, गछ कोन करथिला, इट वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो and it was helping in percolation of the water to the ground। तापर ट्रांसपिरेशन थ्रू रु वाटर साइकिल मेंटेन होतिला। बट नाउ ये जो रन ऑफ अधिका हे जाउची, रन ऑफ जो अधिका हे जाउची, it will impact the water cycle, and hence what will happen? It will also impact the monsoon indirectly। ठीक अछि, एटा भी गोटे रीजन। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। तो आपण कोन करिवे जेतो बळे आंसर आसिला तो आंसर रे आपण को पॉइंट काढियार अछि। सी सम टाइम्स व्हाट हैपेंस, दे गिव सच क्वेश्चंस जो थरे की पॉइंट नथिबो। फॉर एग्जांपल एथिरे जदी आपण खाली फैक्टर्स इंडियन मॉनसून रो फैक्टर्स भाबिबे पॉइंट बाहरिबो ही ना, चांस ही नै पॉइंट बाहरिबार। ओके, तो आपण कोन करिया पड़िबो, किंतु आपण देखंतु दैट इज व्हाट दे चेक इन अ एस्पिरेंट। सेन देखंती केते स्मार्टली जने आंसर करि परछि। ओके, सब क्वेश्चन एथि पे दिया ही न थाए कि सब क्वेश्चन बहुत पॉइंट थाए। किछि क्वेश्चन एमतिया दिया हेते जो थरे की पॉइंट न थाए, आ सेठी से माने चेक सेटा काहे देथान चेक करिया को कि पिला पॉइंट जनरेट करि परछि कि नै, केते एक्टिव माइंड अछि, केते एनालिटिकल माइंड अछि। तो एठी आपण कोन कले इंडियन मॉनसून कथा भाबी, तो इंडियन मॉनसून रे आपण जानले कि डिलेड मॉनसून होउची क्लाइमेट चेंज पई। आउ फैक्टर्स आपण एलिनो गोटे फैक्टर ताकू नै गले, डिफरेंशियल हीटिंग गोटे पॉइंट नै गले। ठीक अछि, तापर पॉइंट नै, तापर आपण शिफ्ट करि गले टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप। आउ एठी मु जानि छी आपण समस्या आराम से 5-6 पॉइंट जनरेट कर दे। फॉर एग्जांपल आखि बंद करी डिफोरेस्टेशन समस्या लिखि देबे, राइट? तो डिफोरेस्टेशन रे हमरो वाटर साइकिल इंपैक्ट होउची कि ट्रांसपिरेशन इंपैक्ट होउची, राइट? आउ गोटे पॉइंट आपण समस्या लिखि परिबे कि कंक्रीटाइजेशन सेथुर अधिका गरम हो जाउची। आउ गोटे पॉइंट लिखि परिबे कि पोल्यूशन,
सेथुर अधिका वर्षा हो जाउची, राइट? हाई राइज बिल्डिंग्स, दैट इज अ गुड पॉइंट, सेथुरु कोन होउची। आ गुटे भलो पॉइंट हला कि नॉर्थ वेस्ट रे मु जोटा कहली इरिगेशन हो जाउची अधिका, तो लैंड कूल हो जाउची। सो दैट इज अनदर पॉइंट। सो यू हैव टू जनरेट पॉइंट्स, आपन को भाबे को पड़िबो कि पॉइंट कोठु आसीबो। खाली जी खाली इंडियन मॉनसून फैक्टर भाबी कि रहिला एठी तापे तापे पॉइंट नथिबो। आपन भाबे को इंडियन मॉनसून इज नथिंग बट मॉनसून टा कोन रेनी सीजन, रेनफॉल होची, रेनफॉल हबार फैक्टर्स कोन अछि, एटा इंडियन मॉनसून फैक्टर सरी गला। रेनफॉल हबार फैक्टर्स कोन अछि, रेनफॉल हबार जा फैक्टर्स अछि, कंडेंसेशन न्यूक्लियस दरकार, विंड जो हमर मॉइस्चर टा जो वेपर टा कंडेंस हबा दरकार। ओके, तो से पॉइंट को पड़ेगा अपन, राइट? बुझा गला ये पार्ट टा, ये आंसर बुझा गला केमते अप्रोच करिवे? Yes, sir. ओके, एवरीवन ऑन सर माने याको काउंटर एग्रीमेंट काउंटर आर्गुमेंट पे देबार अछि कि क्वेश्चन एक्चुअली हां सेटा मु जानली अपन काई पचारले, सेटा अपन एथि पे पचारछन कारण क्वेश्चन ने पचारची डू यू एग्री, राइट? कोडा गला गोटे सेकंड। यस यस यस, कारण एटी पचारची डू यू एग्री, बट द थिंग इज एटा इवन दो इट इज नॉट कंक्लूसिव, आपण एटा को कोन करि परिबे कंक्लूजन रे लिखि परिबे, दो the changes in the monsoon are as climate change is regarded as one of the major reason, or the humanizing landscapes are regarded as one of the major reason for the change in the behavior of Indian monsoon. But still the research is going on and we haven't concluded yet, or we are not in a conclusive state, okay, to clearly say that to clearly say how these changes are being impacted by climate change. That means you, in the conclusion, you will just say that yes, climate change is impacting, but still now we haven't concluded, or we do not have enough research to specify the reasons. Okay, but yes, there are some problem due to the climate change. तो अपन सेठी सेया ही कहबे कि climate change पाई होउची impact, but still research is going on and we are not in a conclusive state to determine the exact reasons. It is do you agree देची, because everyone knows that this is the reason, ठीक है जी, this is the reason why there has been changes in the Indian monsoon, but the problem is माने एटी जो do you agree दे देची, generally हमें कौन करू do you agree रे हमें दो कि हमें दी साइड दो, one supporting the statement, another is opposing the statement, but here you don't have much to oppose, because everyone know that even though it is not concluded yet, even though we do not know the exact reasons, but we know yes, due to climate changes these are the problems. Okay, बुझाला? यस सर Okay, so that is what we have to write, ki it is not concluded yet, but or it is not proved, but these are the problems that we are facing due to climate change. Aro kichi opposite side nahi, because these are the reasons, mane aro kichi counter argument आ ऊपर किछि नाही. ओके, ठीक अछि. सो अभी डाउट अछि क्लास रे? एनीवन को पार्ट रे किछि डाउट अछि? Okay, fine. So I am ending the class here. Okay, tomorrow we'll be discussing cyclone and some other topics of climate. आउ किछि पार्ट म आपनकु हैंडआउट देबी, जोटा कि बहुत फैक्चुअल पार्ट आउ सेथिरे बेसी किछि कहबार नै, तार म हैंडआउट देबी. ठीक अछि?
So I am ending the class here. Good night. Good night. Good night, sir.